करुछंती एवं विभिन्न जिला मानकरे जो कॉर्पोरेट एवं इंडस्ट्रियल संस्था माने मध्य अछंती सेठी जाई कि इंटर्नशिप करुछंती जद्वारा कि से माने 120 घंटा ए इंटर्नशिप रे बितेई 4 क्रेडिट जो हमर एकेडमिक क्रेडिट बैंक अछि सेथिरे से माने शामिल करि परिबे। एमिति अनेक कार्यक्रम गुड़िक उच्च शिक्षा विभाग तरफ निया जाउछि एवं मु आशावादी अछि जे आगामी दिन मानकरे 2036 मसियारे जेतेबेले आमे समृद्ध विकसित ओडिशार परिकल्पना करुछंती माननीय प्रधानमंत्री 2047 मसियारे विकसित भारत वर्षर परिकल्पना करुछंती सेतेबेले विकसित ओडिशा निर्माण रे विकसित भारत वर्ष गठन रे गोटे ज्ञान आधारित अर्थनीति को बलिष्ठ भूमिका देबा पई आम उच्च शिक्षा विभाग निश्चित भाव में कार्य करिवो। समस्त को आउथरे कृतज्ञता धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी भारत माता की जय। Thank you, sir, for your kind address. Moving ahead, may I now invite Sri Sampath Chandra Swain, Honorable Minister, Industries, Skill Development and Technical Education Department for his kind address. Sir, please. जय जगन्नाथ। आज राज्यर विभिन्न विश्वविद्यालय आसीथिबा समस्त बीसी मानकर जो कॉन्फ्रेंस होउची एई कॉन्फ्रेंस रे मंचे रे आम सहित उपस्थित अछंती आम ओडिशार महामहिम राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति महाशय मंचे रे उपस्थित अछंती ओडिशार लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य मोहन चरण माझी महोदय उपस्थित उपमुख्यमंत्री श्री कनक वर्धन सिंहदेव महाशय उपस्थित अछंती आमर स्कूल एंड मास एजुकेशन मान्यवर मंत्री श्री नित्यानंद गौंड महाशय एवं उपस्थित अछंती हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मान्यवर मंत्री श्री मुकेश महालिंग महाशय उच्च शिक्षा विभाग मान्यवर मंत्री श्री सूर्यवंशी सूरज महाशय एवं मो सामने उपस्थित ओडिशा सरकार समस्त वरिष्ठ अधिकारी माने विभिन्न विश्वविद्यालय आसीथिबा समस्त भाइस चांसलर माने एवं विशिष्ट शिक्षाविद माने सांबादिक बंधुगण समस्त को आज कार्यक्रम रे समस्त को शुभेच्छा और शुभकामना। बंधुगण देशर उच्च शिक्षा क्षेत्र रे जो वैप्लविक परिवर्तन एवं चली परिवर्तन समय रे एभली एक गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजन करिथिबारु मु आमर महामहिम राज्यपाल को हृदय धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। आज विश्व द्रुत गति रे आगु को बढ़ुछि एवं एई बदलुथिबा समय सहित आमर मध्य शिक्षादान पद्धति आम चिंताधारा रे मध्य परिवर्तन आसीबा आम पई एक बड़ आह्वान आम सामना रे। तेणु एही परिप्रेक्षी रे आजिर एही कॉन्फ्रेंस रे जो सब आलोचना हबो ये विषय वस्तु गुड़िक समयोपयोगी और भविष्यत को दृष्टि रे रखिकी मध्य ये प्रस्तुत करा जाई अछि। देश गठन रे विश्वविद्यालय गुड़िकर भूमिका शिक्षार नूतन दिग इनोवेशन टेक्नोलोजी एवं जातीय शिक्षा नीति 2020 उपरे कार्यकारिता उपरे आलोचनार अर्थ आमे आमर युवपीढ़ी और अर्थनीतिर भविष्यत को एक नुआ रूप देबाकू आमे जाउचे एवं ग्रीन एनर्जी सस्टेनेबिलिटी एआई क्वांटम कंप्यूटिंग एवं इंडस्ट्री एकेडेमिया सह आमे किभली भाबरे सहभागिता हेई एगुडी को भिन्न भिन्न प्रसंग नुहे बरम वर्तमान द्रुत परिवर्तनशील विश्व पई आमे आमर छात्र छात्री माननको किभली भाबरे प्रस्तुत करूचु ये सबु सेही विषय रे गभीर भाबरे जड़ित एवं मु एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग प्रति आपण मानकर दृष्टि आकर्षण करने को चाहूँगी जहाँ यही सब विषय सहित ये होतपुत भाव जड़ित अच्छी ता हेउची
उच्च शिक्षा सहित दक्षता विकास समन्वय जो कथा आमर उच्च शिक्षा मंत्री पूर्व कहते जे प्रथमे आमे केवल डिग्री नहीं कि आगु को बढ़िले आज जहाँ समाज आवश्यक करुच्ची आमे छात्र छात्री मानू से भाव में प्रस्तुत करिपरिबा नाही तो डिग्री सहित स्किल रो इम्पोर्टेंट अच्छी आमे भी मध्य विभिन्न उच्च शिक्षा विभाग सहित विभिन्न स्थान रे मध्य स्किल डेवलपमेंट सेंटर मध्य प्रतिष्ठा करिचु जे शिक्षा और दक्षता विकास ये दुईटी दिग बोली आमे भाबुथिलु किंतु विश्वविद्यालय रे आमे जदि केवल पुस्तकगत ज्ञान उपर आमे जोर दबा ताहले केबे छात्र छात्री माने आगु को बढ़ी परिबेनी आज जहाँ सोसाइटी नीड करुची एवं दक्षता विकास को स्वतंत्र क्षेत्र भावे एबे आमे विचार को नहींचे मात्र वर्तमान द्रुत परिवर्तनशील अर्थनीति रे यार कौनसी पार्थक्य नहीं आजिर समय रे आमे जदि डिग्री हासिल करिबा ये सफलतार केबे हेले मापकाठी हेबो नहीं बरम निजुक्ति योग्यता ही शिक्षार मूल लक्ष्य हेबा उचित तेणु जोंटी आमर जो विषय पाठ पढ़ा होउची सेठी किबळी भाबरे छात्र छात्री मानू आमे स्किलिंग करेबा सेमानकु ट्रेन करेबा ता उपरे मध्य गुरुत्व दिया जाउची एवं समस्त भिसीओ शिक्षाविद मानू मध्य मोर अनुरोध रहिबो शिक्षानुष्ठान गुड़िकरे व्यवहारिक पाठपढ़ा उपरे अधिक जोर दबा इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप लाइव प्रोजेक्ट एवं इंडस्ट्री सहित मिलीमिशी विभिन्न पाठ्यक्रम को आमर मुख्य अंश करा जाऊ पाठपढ़ा केवल बही बा चारिकांथ भितरे सीमित न रही लैबोरेटरी वर्कशॉप एवं प्रत्यक्ष कार्य क्षेत्र रे मध्य किभली आमे पहुंचीबा ता ऊपर आमे गुरुत्व देवार आवश्यक अछि एवं डिग्रीधारी केवल न होइकि शिक्षा समाप्त परे निजुक्ति पाई किभली भाबरे संपूर्ण प्रस्तुत रहिबे सेति पाई मध्य आमको व्यवस्थित भाव में आमे जो काम आरंभ करछे ताको आहुरी मध्य त्वरान्वित करिकि मध्य आमे आगु को बढ़िबा एवं एनईपी 2020 आमको बढ़िबा पाई मध्य बाट देखै सारिछि आम राज्य रे माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व रे जो भली भाव में जातीय शिक्षा नीति को आम राज्य रे प्रतिष्ठा करैकि आमे आगु को बढ़ुचे एवं एही नीति रे एक सामग्रिक और बहुमुखी शिक्षा व्यवस्था परिकल्पना करा जायछि वोकेशनल एजुकेशन को मुख्य धारार शिक्षा सहित मध्य सहजरे सामिल करा जायछि पाठपढ़ार फ्लेक्सिबिलिटी मल्टीपुल एंट्री एंड एग्जिट एवं ता सहित क्रेडिट भित्तिक शिक्षा व्यवस्था उपरे मध्य गुरुत्व मध्य दिया जायछि एबे एबे आमे मध्य टेक्निकल एजुकेशन रे किभली भाबरे स्टार्टअप मानु को प्राधान्य देई स्टार्टअप मानु को प्राधान्य दियब ता पई मध्य आमे व्यवस्था करि हमर विभाग रो अधिकारी माने एवं विभिन्न यूनिवर्सिटी रो भिसी मानक सहित हमर मध्य विभिन्न प्रकार आलोचना मध्य विगत दिन रहिछि जे इंजीनियरिंग पाठ पढ़िला बेले जो असाइनमेंट आमे करूचे तांकू किभली भाबरे सेही समय रे छात्र छात्री माननकू आमे प्रोत्साहित करिबा जे इंडस्ट्री रो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंडस्ट्री कोन प्रॉब्लम फेस करूची से प्रॉब्लम स्टेटमेंट उपरे काम करिबा पई एवं सेही समय रु जदि इनोवेशन उपाय माध्यम रे बा नुआ परिकल्पना करिवे से प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करिवारे जदि छात्र छात्री माने सफल हेले सेउटु ही स्टार्टअप निर्माण हेबे एवं स्टार्टअप रे मध्य आम राज्य आगु को बढ़ी पारिबो बा राज्यर अभिवृद्धि हेई पारिबो ता उपरे भी मध्य हमर विषय मानू गुरुत्व दबा पाई मध्य कुआ जायछि एवं निश्चित भाव में आज समय को आवश्यक करी आज ये कॉन्फ्रेंस जो आयोजन करा जायछि आज चर्चा आलोचना हेबा परे निश्चित भाव में ये एक नुआ दिग दब उच्च शिक्षा क्षेत्र में आगु को बढ़िबा पाई एबे विश्व रे जो परिवर्तन बा शिक्षा पद्धति रे जहाँ आवश्यक आज ये आलोचनार निर्कश निश्चित भाव में बाहरिबो एवं एठी उपस्थित थिबा समस्त शिक्षाविद मानू भिसी एवं वरिष्ठ अधिकारी मंचासीन समस्त नेतृमंडली को मुझे धन्यवाद दौची एवं एभली कार्यक्रम आयोजन कर समयोपयोगी सम्मेलन आयोजन करू आमर महामहिम राज्यपाल को धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन करी मो वक्तव्य को शेष कर धन्यवाद वंदे उत्कल जननी। Thank you, sir, for that kind address. I now have the privilege to invite Shri Nityananda Gonda, Honorable Minister, School and Mass Education, ST and SC Development, Minorities and Backward Classes Welfare, and Social Security and Empowerment of Persons with Disabilities Department, Government of Odisha, to deliver his kind address. Sir, please.
जय जगन्नाथ। राज्य सरकारी और घरोई विश्वविद्यालय कुलपति सम्मेलन उद्घाटन अधिवेशन रे आज आम गहन रे उपस्थित रही मान्यवर राज्यपाल तथा कुलपति डॉक्टर हरिबाबू कम्मपति महाशय आम पाखे उपस्थित रही ओडिशा राज्यर लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी महाशय मंच रे उपस्थित रही आमर मान्यवर उपमुख्यमंत्री श्री कनकवर्धन सिंहदेव महाशय मान्यवर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग महाशय मान्यवर उच्च शिक्षा मंत्री श्री सूर्यवंशी सूरज महाशय मान्यवर दक्षता विकास और वैश्विक शिक्षा मंत्री श्री संपद स्वाही महाशय एठी उपस्थित रहिथिबा राज्य सरकारी और घरोई विश्वविद्यालय कुलपति महाशय महाशया माने एवं एठी उपस्थित समस्त विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिकारी बंधुगण मीडिया समस्त प्रतिनिधि बंधुगण आपण मानक समस्त को मोर नमस्कार। निश्चय आज मान्यवर राज्यपाल महोदय अध्यक्षतार यही अति गुरुत्वपूर्ण कुलपति सम्मेलन रे योगदान करिवार सुजोग मिलिथिबार मु निश्चय तांको कृतज्ञता जनाऊँगी एवं उच्च शिक्षा नवप्रवर्तन शैक्षिक सुधार एवं युवक विकास उपरि चर्चा पाई यही दूरदर्शी प्लाटफर्म प्रदान कर महामयी को एवं एठी आयोजन कर समस्त को धन्यवाद ज्ञापन करुछि। निश्चय आज विद्यालय गणशिक्षा विभाग शिक्षार विकास पाई आम सरकार आसीबा परे शिक्षार गोटे परिवर्तन केमती आसीबो सेथिपाई मान्यवर मुख्यमंत्री मार्गदर्शन रे एवं मैं निश्चय धन्यवाद देवी देशर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में जातीय शिक्षा नीति 2020 को देश में लागू कले तार परवर्ती समय ओडिशा रे जातीय शिक्षा नीति लागू हो नथिला। नुआ सरकार आसला परे मान्यवर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नेतृत्व रे ओडिशा रे जातीय शिक्षा नीति को कम दिन रे लागू करिबा पय आमे प्रयास करिछे। सेथिपाई एक स्टीयरिंग कमिटी भी गठन होइथिला एवं तांकर मार्गदर्शन रे आमे कम दिन भितरे ओडिशा रे जातीय शिक्षा नीति को लागू करिबा पय आमे प्रयास करिछे एवं सेथिरे आज जातीय शिक्षा नीति माध्यम रे एनसीईआरटी बुक प्रस्तुत करिथिला सेही अनुसार आमे एसईआरटी माध्यम रे भी आमे ओडिशा राज्य रे प्राय आमे अष्टम श्रेणी पर्यंत 55 गोटी बही आमे प्रस्तुत करि सारिछे एवं सेथिरे चलित जो 26-27 शिक्षा वर्ष रे ये जातीय शिक्षा नीति को आमे लागू करिछे एवं लागू करिबा पाई भी तल स्तर पर्यंत जातीय शिक्षा नीति ठीक भाव रे केमती लागू हबो एवं सेथिरे आमे केमती सफल हेबा सेथि पाई भी आमे प्राय 1000 ऊर्ध्व मास्टर रिसर्च पर्सन से तालीम है परवर्ती समय रे से माने तल स्तर पर्यंत तालीम देवार व्यवस्था कले। आज से भली भाव रे आज जातीय शिक्षा नीति ओडिशा रे लागू होची। आपण माने समस्ते जानती जे सरकारी स्कूल रे आमर प्राक विद्यालय व्यवस्था नथिला किंतु आमे वर्तमान आमे सरकारी विद्यालय रे भी आमे शिशु बाटिका 3 को आम वर्तमान लागू करिछे एवं ओडिशा राज्य रे प्राय 45,000 स्कूल रे शिशु बाटिका खोलीचे एवं शिशु बाटिका रे शिशु सेविका नियुक्ति देवार भी आम सरकार को करिछे एवं शिशु श्रेणी रे शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करिबा पाई निपुण भारत निपुण ओडिशा भली स्कीम को भी आमे लागू करिछे एवं सेही भली भाव रे
आमे शिशु बाटिकारे शिशु श्रेणी रे विशेष करी मौलिक साक्षरता और संख्यागान हासिल को शिशु श्रेणी रे केंती सुदृढ़ हब सेथिपाई विभाग तरफ संपूर्ण ध्यान दिया जाइछि एवं ता पाई भी वर्तमान आवश्यक शिक्षण सामग्री हो जमती जादू पेड़ी आज आमे प्रति प्राइमरी स्कूल रे आमे देवार व्यवस्था करिछे जहा फल रे शिक्षा व्यवस्था रे परिवर्तन आसुछि विशेष करी जातीय शिक्षा नीति माध्यम रे विद्यालय स्तर रे वोकेशनल एजुकेशन हो एआई को गुरुत्व दिया जाउछि जहा फल रे पिला मानक भितरे जो दक्षता विकास हबो सेमानकर विद्यालय पाठपढ़ा समाप्त परे परे आमरी कौनसी युवक युवती सेमान बेकार न रही तांको पाखरे रहितिबा स्किल माध्यम रे सेमाने निजको निजे नियोजित करि परिबे एवं सेमाने स्वावलंबी हेबे सशक्त ही परिबे जहा कि आज आमे 2036 रो ओडिशा 2047 रे देश आमर विकसित ओडिशा विकसित भारत रो जो स्वप्न देखुछु से निश्चय ये जातीय शिक्षा नीति माध्यम रे ताहा में साधित करि परिबो सफल ही परिबो से भली शिक्षा व्यवस्था आज ही पारुछि तो निश्चय विद्यालय गुण शिक्षा हेउछि आमर विश्वविद्यालय गुड़ाकर मजबूत भित्तिभूमि विद्यालय रे जदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न हुए तेबे उच्च शिक्षा कदापि सफल हेबो नाही जातीय शिक्षा नीति 2020 रो पूर्ण कार्यकारीकरण शैक्षिक सुधार बहु विषयक शिक्षा दक्षता समन्वय नव प्रवर्तन एवं डिजिटल रूपांतरण पाई विद्यालय स्तरु कार्य आरंभ हेबा अत्यंत आवश्यक आम सरकार ए दिगरे प्रतिश्रुतिबद्ध अछि आमे प्रतिश्रुतिबद्ध जे प्रत्येक छात्र छात्री विद्यालय बाहरिबा समय रे केवल शैक्षिक दृष्टि शक्तिशाली नुहे बरं नैतिकता संपन्न उद्भावनशील सामाजिक दायित्ववान और जाति प्रेमी हेबे विद्यालय स्तर रे एनएपी 2020 कार्यकारीकरण द्वारा विश्वविद्यालय को प्रस्तुत और दक्षता छात्र छात्री जगाइबारे आमे पूर्ण प्रतिश्रुतिबद्ध शिक्षक तालीम पाठ्यक्रम सुधार एवं डिजिटल सुविधा प्रदान करी आमे याको वास्तव रे रूपायित करूछु आज महामहिम द्वारा घोषणा होइतिबा समस्त उद्यम भारत स्काउट्स गाइड्स कार्यक्रम भारतीय रेड क्रॉस कार्यक्रम सबलीकरण मादक द्रव्य मुक्ति सचेतनता अभियान जाति निर्माण छात्र नेतृत्व सामाजिक दायित्व सबु को विद्यालय स्तर आरंभ करिबो मादक द्रव्य मुक्ति अभियान को विद्यालय आरंभ करी युवपीढ़ी को सुरक्षित और स्वास्थ्यवान रखिबारे आमे पूर्ण सहयोग करिबो विज्ञान प्रजुक्ति विद्या नवप्रवर्तन सबुज शक्ति क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परी आधुनिक क्षेत्र में छात्र छात्री को प्रस्तुत करबा पई विश्वविद्यालय सहित मिलित कार्यक्रम चलेबो चांसेलर कप इंग्राजी और ओडिया डिबेट नवप्रवर्तन और अन्य कार्यक्रम रे विद्यालय विश्वविद्यालय मध्य पूर्ण समन्वय स्थापन करिबो विद्यालय और विश्वविद्यालय को सहज उद्देश्यपूर्ण और दक्षतापूर्ण परिवर्तन पाई विश्वविद्यालय सहित पूर्ण भागीदारी और सहयोग प्रदान करिबो ओडिया भाषा संस्कृति और परंपरा को शिक्षार मूल आधार करी जातीय मूल्यबोध सहित समन्वय स्थापन करिबो एही दुई दिनिया सम्मेलन रे फलप्रद आलोचना उपयोगी सुपारिश और कार्यकारी पदक्षेप हेबार आशा रखुछि समस्त कुलपति और विशेषज्ञ मतामत और अभिज्ञता आम विद्यालय शिक्षा व्यवस्था को आउरी सबल और आधुनिक करिबा ओडिशा एनईपी 2020 कार्यकारीकरण एक आदर्श राज्य करिबा और चाकरी प्रस्तुत नुहे जाति प्रस्तुत युवपीढ़ी गढ़ा आमे मिलित प्रयास करिबो निश्चय जातीय शिक्षा नीति आज अंतर्भुक्त दक्षतामुखी और व्यवहारिक शिक्षा उपरे कार्य करुछि तो एथिरे निश्चय आमर भविष्य युवपीढ़ी को
ये निश्चय गाइड करिवो एवं भविष्य आम देशर विकास रे सहायक हबो यही आशा रखी मोर वाणी को विराम दौची। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। धन्यवाद। Thank you, sir, for that kind address. We now request Dr. Mukesh Mahaling, Honorable Minister, Health and Family Welfare, Electronics and IT, and Parliamentary Affairs Department to address this August gathering. Sir, please. समस्त को नमस्कार, जय जगन्नाथ। वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस आजिकार मुख्य अतिथि ऑनरेबल गवर्नर ऑफ ओडिशा एंड चांसलर डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति, मान्यवर लोकप्रिय मुख्यमंत्री ओडिशा प्रदेश श्री मोहन चरण माझी जी, मान्यवर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कनकवर्धन सिंहदेव जी एवं मंत्रिमंडल रे मोर साथी सूर्यवंशी सूरज जी, संपत स्वाई जी, नित्यानंद गौंड जी एवं ये सभागार रे उपस्थित थिबा आमंत्रित समस्त वाइस चांसलर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, प्रेस एंड मीडिया समस्त को मोर अनेक अनेक शुभेच्छा। आज मन की बात कार्यक्रम परे परे वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस निश्चित भाव में गोटे नुआ प्रेरणा देइथिबो एवं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को आमे जो आज 2 दिन धरी आलोचना हबो, निश्चित भाव में यार जहाँ भी निष्कर्ष बाहरिबो ताकू सरकार तरफरु आगामी दिन में गुरुत्व दियाजिबो, ये आशा एवं भरोसा सरकार तरफरु मु आपण मानकु दउछि। द्वितीय विषयटी है जे आमे लॉर्ड मैक्ले वे ऑफ एजुकेशन पॉलिसी रु आज एनईपी 2020 पर्यंत पुणी थरे भारत वर्ष को विकसित राष्ट्र करिवा रो जो परिकल्पना एवं एजुकेशन पॉलिसी रे चेंजेस आनी आमे नुआ भारत निर्माण करिवा पाई जो परिकल्पना निश्चित भाव रे आगामी दिन रे बड़ आमको गोटे स्ट्रेंथ देव। मु धन्यवाद देवी भारत नरेंद्र मोदी जी एवं मान्यवर उच्च धर्मेंद्र प्रधान जी को जे आमे जार एजुकेशन पॉलिसी एवं मान्यवर चरण माझी नेतृत्व रे ओडिशा प्रदेश रे ये 2 वर्षर सरकार रे है जे आमे नुआ एजुकेशन पॉलिसी को आमे लागू करिया पई ओडिशा प्रदेश रे पदक्षेप ग्रहण करिछु। 2-3टा दिग प्रति आज आलोचनार विषय वस्तु हिसाब रे मु आपण मानक उपरे उपस्थापन करिया पई चाहूची। प्रथम कथाटी है जे नुआ एजुकेशन पॉलिसी कहूची जे स्टार्टअप इनोवेशन कॉन्सेप्ट को आमे आगो को नेबा एवं आत्मनिर्भर भारत को आगो को नेबा। तो एथि पई आम सरकार पाखरे मोर पाखरे जहाँ डाटा अछि जे एमएसएमई डिपार्टमेंट पाखरे आमर स्टार्टअप विभागटा अछि। मु ए सभागार रे अनुरोध करिवि मान्यवर गवर्नर, मान्यवर मुख्यमंत्री को जे ए जो स्टार्टअप इनोवेशन कार्यक्रमटा जॉइंटली हायर एजुकेशन एवं टेक्निकल एजुकेशन विभाग ताकू लीड करू, जा द्वारा एवं स्कूल एंड मास एजुकेशन रो भी इन्वॉल्वमेंट रहू, जा द्वारा स्टार्टअप इनोवेशन तृणमूल स्तर रु हायर एजुकेशन पर्यंत जीव, एटा मोर आशा एवं विश्वास। द्वितीय विषयटी है जे जेहेतु स्कूल एंड मास एजुकेशन एवं हायर एजुकेशन गोटे जो माने न्यू एजुकेशन पॉलिसी रो बड़ इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी तांकर विभाग रो कोऑर्डिनेशन पाई दी विभाग रो गोटे आइदर एडिशनल सेक्रेटरी रैंक रो नहले जे रही ए दी विभाग को कोऑर्डिनेट करिवो बोली मोर आशा एवं विश्वास। तृतीय प्रस्तावटी है जे मान्यवर गवर्नर डॉक्टर कंभमपति सबुबेले मु जेतेबेले आम तांको सहित देखा हुए गोटे कथा कहंती जे व्हाई नॉट वाइस चांसलर मानकर टेन्यूर बयस एवं गोटे फॉर्मेट रे कहीं ओडिशा प्रदेश रे हो नाही। तो ये नुआ एजुकेशन पॉलिसी को मध्य इम्प्लीमेंट करिवार जो दायित्व जो सबु विभाग रो अछि वाइस चांसलर मानकर तांकर
बयस टेन्युअर सेटा गोटे फॉर्मेट रे हबो बोली मु आशा करूची एवं ओयूटी भिसी टेन्युअर 3 वर्ष हला बेले बीपीयूटी भिसी 5 वर्ष ए भलिया जो डिस्क्रिमिनेंसी अछि ताकू दूर करिवे बोली मोर आशा और विश्वास ता सहित नुआ एजुकेशन पॉलिसी को जेतबेले इंप्लीमेंट आम करूछु वाइस चांसलर्स आउ डिफरेंट कॉलेज रो प्रिंसिपल कानन को मध्य गोटे बड़ कोऑर्डिनेशन रो आवश्यकता रही जोटा कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी वाइस चांसलर रो कोनोसी कॉलेज रो प्रिंसिपल ऊपर नाही तो यहाँ को केमिति करा जिवो एवं मोटे छोटिया एग्जांपल देबी गोटे ट्रिपल आईटी रो डायरेक्टर मोर आईटी विभाग रो अछि से दीर्घ 14 वर्ष धरिगिरी गोटे डिपार्टमेंट रो डायरेक्टर हेकी रहिले तो जा द्वारा गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्रेंसी हेबा द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी रो मध्य ए जो ताकू केमिति लागू करा जाय परिबो ताकू आमे आगु को नेबार आवश्यकता रहिछि ता सहित स्कूल रे ड्रॉप आउट कमेवा पई न्यू एजुकेशन पॉलिसी रो गोटे बड़ भूमिका तेणु जीआर इश्यू को केमिति आमे अंगनवाड़ी रु नेइकरी हमर हायर एजुकेशन पर्यंत तांकू केमिति कोरिलेट करा जाय परिबो ता उपरे आलोचना करिवार मध्य किछि आवश्यकता रहिछि ता सहित हमर जो यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज लेवल रे इंटीग्रल क्वालिटी एश्योरेंस सेल आईक्यूएसी अछि ताकू आमे मल्टीडिसिप्लिनरी कांसेप्ट रे जदी रखिबा ताहेले यूनिफॉर्म ताहेले हमर जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमिटी रे टेक्निकल हायर एजुकेशन ए सबुर मिसिले निश्चित भाव में आगामी दिन में एनईपी सुफलप्रद हबो बोली मोर आशा एवं विश्वास एवं आईटी विभाग रु पाखापाखि 4टा पॉलिसी आमर कराही आईटी पॉलिसी जीसीसी पॉलिसी सेमीकंडक्टर पॉलिसी तो ये जो पॉलिसी गुड़ारे ये जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट मानक पई सेमीकंडक्टर पॉलिसी रे आमे इलेक्टिव कोर्स में 15,000 टंका देवार व्यवस्था करिछु तो ताकू बीपीयूटी तरफ ताकू इम्प्लीमेंट करिकरी आमे केमिति न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इनलाइन करिकरी ए जो स्टाइपेंड पैसा दिया हबो पिला माने जेहेतु सेमीकंडक्टर हब ओडिशा प्रदेश आगामी दिन रे हेबा को जाउची ताकू केमिति आगु को नेबे ता पई सुव्यवस्था करिवे एवं आ गुटे बड़ खबर जे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पई डिजिटल इंडिया एवं इंटरनेट एटा गोटे बड़ व्यवस्था तेणु मु धन्यवाद देवी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जे ओडिशा प्रदेश में 4,000 कोटी टंकार भारत नेट कार्यक्रम सैंक्शन करिसंती आगामी 3 वर्ष मध्य कार्य कंप्लीट हेबो एवं प्रति ब्लॉक एचे यूनिट एवं ग्राम पंचायत ए यूनिट हिसाब रे हमर इंटरनेट केबल डाटा सेंटर हबो जा द्वारा कि स्कूल कॉलेज एवं सबु एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सबुथिरे ब्रॉडबैंड एवं लैंडलाइन रो व्यवस्था करा हबो जा द्वारा डिजिटल इंडिया कांसेप्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी रे थॉट प्रोवोकिंग जो हमर सिस्टम रे आमे केमती ताको डिजिटल इंडिया रे पाठ पढ़िबा ताको मध्य आगो को नेबा पई व्यवस्था करा हैछि विथ दिस वर्ड्स आई मस्ट थैंक्स टू द ऑनरेबल गवर्नर चीफ मिनिस्टर्स एंड एंटायर ऑगस्ट गैदरिंग ऑफ द हाउस ए सुब्रे आपण माने डिस्कशन करी आगामी दिन रे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ओडिशा प्रदेश रे केमती ट्रू सेंस रे लागू करा पाई जाई परिबो एवं आत्मनिर्भर भारत प्रति आगो को जिवा ई विषय सत्यर मोर वाणी को विराम दउछि नमस्कार जय जगन्नाथ। Thank you, sir, for that thoughtful address. It is a matter of great privilege to invite Shri Lok Bhavan Singhdeo, Honorable Deputy Chief Minister and Honorable Minister, Agriculture and Farmers Empowerment and Energy Department for his kind address. Sir, please. Jai Jagannath. His Excellency, Honorable Governor cum Chancellor of Odisha, Shri Haribabu Khambampati ji, Honorable Chief Minister, Shri Mohan Majhi ji, my colleague ministers, Shri Dr. Mukesh Mahaling, Shri Nityanand Gaund ji, Shri Suryavanshi Suraj, Sampad Charan Swai, respected Vice-Chancellors, academicians and distinguished guests, friends from the electronic and print media. First and foremost, I would like to congratulate His Excellency
the Governor cum Chancellor for convening this conference timely. As we know, universities are not mere repositories of knowledge. They are engines of innovation, character building, and social transformation, and nation building. The future of our state and nation depends substantially on the quality of education, research, and leadership emerging out from our institution. My colleagues earlier have all talked about the National Education Policy 2020, and which articulates a visionary roadmap for a holistic, multidisciplinary, and global competitive education ecosystem. Odisha is fully committed to realize the vision under the leadership of our Honorable Chief Minister, with sustained efforts to strengthen infrastructure, enhance employability, promote research and innovation, and ensure equitable access to quality education. Universities must serve the farmers and entrepreneurs, the artisans, the common man, not merely the elite. I am to share that OUAT exemplifies this model through its land grant mandate, weaving teaching, research, and extension across 10 colleges, 19 research stations, 31 KVKs, and 10 agro-polytechnic centers. By honoring the farmers through honorary doctorates and preparing proactive contingency plans for climate change, OUAT has been steadfastly working towards translating inclusive development into tangible reality. Research and innovation must become integral to the academic culture. Universities should create solutions, address local challenges while contributing to national priorities. Whether water management, sustainable agriculture, disaster resilience, public health, renewable energy, digital governance, or climate action. As Odisha advances as a growth engine of India, our campuses must be inclusive, safe, environmental, sustainable, and student-centric. Strong collaboration between academia, industry, and government is crucial. Our government is actively pursuing the vision and commitment to extend all possible support to our universities in this regard. One fundamental aspect which is crucial to our academic pursuit, and that is academic excellence, must be inseparable for values of integrity, comparison, discipline, and service. In the end, I appeal to all, let us work together to build institutions that produce not merely graduates but enlightened citizens, innovators, leaders, and nation builders. I once again thank His Excellency, the Governor, for this initiative and extend my best wishes for the success of the conference. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir, for that inspiring address. We shall now have the presentation on achievements and ongoing initiatives by the Higher Education Department under the transformative visions of Viksit Odisha 2036 and Viksit Bharat 2047 by Shri Arvind Agrawal, IAS, Commissioner Secretary, Higher Education Department. Sir, please. Honorable Governor, sir, Honorable Chief Minister, sir, Honorable Deputy Chief Minister, sir, Honorable Minister, Health and Electronics and IT, sir, Honorable Minister, School and Mass Education, Honorable Minister, Skill Development and Technical Education, and Honorable Minister, Higher Education, respected Vice-Chancellors, senior officers of the government, and dear friends. Namaskar. Good afternoon, everyone. It is indeed my honor to present the story of what Odisha's Higher Education Department has accomplished in 2 years and where we are going. Next slide. Honorable Prime Minister has given us a clear mandate
the trinity of talent, temperament, and technology will transform India. Odisha's higher education reforms are anchored firmly in this vision, building an Atmanirbhar, Viksit Bharat through world-class knowledge creation. Next. This is a snapshot of higher education department where we stand today. The department deals with 1,058 colleges, 17 state public universities, plus one national law university. It directly administers around 6.44 lakh students. The gross enrollment ratio is 22.1% as per 2021 data, which is expected to be around 25% at this point of time. College density is 27 per lakh against a national average of 30. You must have seen some gaps, particularly on gross enrollment ratio with respect to the national average, and these gaps are real. But closing this gap is precisely the mission of this government. Our vision 2036 and for 2047, we have kept this vision for ourselves. We have targeted for a gross enrollment ratio of 50% from 22% now to 50% by 2036 and 60% by 2047. The graduate outcomes, 60% of graduates either in jobs, self-employment or in advanced studies. And for global rankings, 3 of our state public universities in top 500, world's best top 500 universities by 2036, and universal access of higher education to all the students, at least 2 colleges per block and 1 university per district. These are all aligned with NEP 2020 with measurable targets for 29, 36 and 47. To achieve this vision, the 7 initiatives are underway. Expand enrollment from 10 lakh to 40 lakh students, where the online classes will play a major role. Enable jobs and self-employment for 60% of the graduates. Ensure high-quality teaching. Improve socially and economically disadvantaged group outcomes for women, SC/ST, and SCBC students. Internationalize education. Attract global institutions. And reform governance by granting autonomy to high-performing higher education institutions. Next slide. In the last 2 years, this government has passed 2 landmark laws, the Odisha University Amendment Act of 2025, which restored functional autonomy to universities of the state under Higher Education Department, and it restored the authority to recruit faculties as per their requirement, their expertise, and it also facilitated the appointment of all 16 regular vice-chancellors, which was only 3 when this government took over. Recently, the University Teachers Reservation Ordinance is also another major step to provide social justice, wherein university has been considered as a unit for reservation during recruitment of faculties. And since then, the universities, out of 16 state public universities, have floated advertisement for recruitment of 1309 faculties, which is a first major recruitment drive in years. No such large-scale recruitment was ever done for universities. The state has also introduced SCBC reservation of 11.25% for the students in different higher education institutions. It was implemented for the first time in Odisha's history. It directly benefited around 90,000 students during the year academic year 25-26. Recently, Honorable Chief Minister has also declared for setting up of 4 new greenfield universities at Jagatsinghpur, Kendrapada, Bhadrak and Jharsuguda. And the department expressed sincere thanks to Honorable Chief Minister for this announcement. The next slide, please. NEP 2020, National Education Policy, much talked about it, is a landmark document, visionary, comprehensive and forward-looking. It was enacted by the Government of India in 2020. However, it took 4 years to implement the same in Odisha. Immediately after taking the office, Honorable Chief Minister has directed for immediate implementation of NEP, and within first 100 days of the office, Higher Education Department could implement the new National Education Policy 2020 in Higher Education Department. And all thanks to Honorable Chief Minister, sir, under your guidance and direction, the department could do it. In 24 months, the 4-year UG program, as mandated in NEP, is live. We have made the provisions for multiple entry and exit.
In the meantime, 7.32 lakh APAR IDs has been created. 3.72 lakh students credit transferred via the ABCs. And interestingly, ITEP, Integrated Teachers Education Program, is launched with 1,500 seats. Previous year, sir, it was only 100, and during the current year, we have had a 14 times jump in the total number of seats in ITEP. In line with NEP, the department has also redesigned the curriculum, and 113 multidisciplinary courses were introduced, and 75 skill-based courses has been introduced across 1,058 HEIs. And sir, under NEP, there is a mandate for regular updation of this curriculum, and I'm happy to share this, that the second revision of the curriculum is also going on within the 2 years of span of time, which is what precisely the requirement of the NEP. And under PM Usha, 4 Merus has been established with 400 crores sanctioned by Government of India. And for the first time, after a gap of 12 years, the syllabus of B.Ed and M.Ed courses are being revised, and it will be implemented from academic year 26-27, sir. And what Odisha has implemented in 2 years for implementation of NEP, many states have done this in 5 years. Next slide. Sir, under the leadership of Honorable Chief Minister, sir, projects over 2,680 crores has been sanctioned for various educational institutions in last 2 years, both with the help of the state and the central government. 676 crore has been sanctioned under PM Usha for 4 Merus, 5 universities for 100 crores, and for different colleges and for gender inclusion. From state government, from its own budget, has sanctioned projects worth 935 crore for construction of classrooms, academic buildings, hostels, staff quarters, innovation infrastructure, etc. Not only this, the aided colleges, 895 crore has been sanctioned for 486 colleges during this period. And for government colleges, 128 crores has been sanctioned for infrastructure, their laboratory, furniture, and other requirements. And 18 new government colleges has been opened in uncovered blocks, largely in aspirational areas. And sir, 45 crore has also fund has been also sanctioned for the colleges located in 10 Gramodar districts, 32 blocks, which were earlier affected by the Naxal activities, sir. So there has been a major push to infrastructure by the Honorable Chief Minister for higher education. For NAC accreditation, sir, I would like to bring up information. I would like to share this with all the participants. 7 of our state public universities under higher education department have received NAC A or above. Ravensa got A++, Utkal University A+, and Utkal University is ranked among 48 state universities nationally. The state has also set up Wi-Fi facilities in 130 plus higher education institutions and almost all universities. Utkal University has implemented this blockchain-based digital degrees certificate. The state has developed their own independent ERP, sir, HIMS, that has been deployed across 800 plus institutions. And in order to make Divyang-friendly infrastructure, the toilets are being constructed in all higher education institutions of Odisha during this period. Further, 100 new girls hostels are being also in the pipeline, where we will provide a major push to facilities for girl students. Next. Sir, I would like to also bring to kind notice, sir, and also for knowledge of all the participants here, Odisha's universities, general universities, are no more educational universities. They are becoming a genuine research institutions. We have 22 Center of Excellences across 8 SPUs. Now new COEs on AI, climate and nanoscience, robotics, tribal studies are also in pipeline. Sir, more than 20,000 publications has been published during this period, sir. And within last 2 years, there has been a substantial increase of 33%. If we see Odisha as a whole, sir, around
1155 patents has been filed by different HEIs, including private universities in the state, sir, which is like prior to 2 years, this number was very minimal, which was around 300. So this shows that within this 2 years period, Odisha is becoming a research-friendly state. More than 300 PhD scholars are provided scholarship, fellowship for different research activities from the state budget. And sir, I would like to share two more small achievements of few of our universities and faculties. Two papers are published in Lancet from Utkal University with an impact factor of 98.4. So this is a big achievement for our general public universities, which were unheard till now. Barampur and FM universities has also got ANRF pair grant. Faculty from FM University ranked within world's top 2% scientists. This is also a big achievement for our faculty, sir. Technology transfer. One product technology has been transferred by Ravensa University for anti-diabetic drugs, sir, and industry production is going on. So it shows that our universities are progressing in the field of research also, and many of our universities have signed more than 75 MOUs with national and global institutions during this period. Next. For students' welfare, sir, our scholarship ecosystem directly serves students at every level of need, sir. We provide more than 45,000 students merit scholarship, 15,000 students receive laptop grants, and recently Honorable Chief Minister has approved a scheme, sir, for Videsh Shiksha Vritti, wherein 50 SC/ST students of the state will get a scholarship up to rupees 50 lakh for pursuing PG and PhD at top 200 universities of the world. This will give a major exposure to our students to read globally. Sir, we have also introduced Shakti Sri initiative, sir, which is basically with an intent to have a female-friendly campuses. And under this initiative, sir, 234 crore has been approved by the government for over a period of 5 years. Some of the statistics, sir, which is like 70%, more than 70% of our students in PG are girls. 58%, more than 58% students of UG in general public universities under higher education department are girls. So there is a need for a female-friendly ecosystem in the campuses. So we have focused on providing female-friendly infrastructure, separate classroom, toilets, the common room, and also the Shakti Sri itself is an initiative where we provide, we ensure that the campuses are safe for them. Next. Sir, as it has already been discussed, sir, under NEP, skill development is a crucial thing for, particularly for students of general streams, sir. With the help of NASCOM, Future Skill Platform, sir, more than 2 lakh students are enrolled and they are learning digital courses. Under this platform, sir, 62 AI and digital courses are extended to all 1,058 HEIs. Sir, with the help of Skill Development Department, the support has been given for GUVI platform by HCL and Coursera, where students have acquired their digital skills. As Honorable Minister of Higher Education was mentioning about internship and community engagement program, sir. Sir, I would like to update, sir, the number has increased from 1.18 lakh to 1.5 lakh students. At this point of time, sir, more than 1.51 lakh students are undergoing internship and community engagement program in various institutions, be it private or public. And so, with the permission, sir, I'll show a video also later on, sir, on this. Sir, we have also introduced, sir, AEDP programs, where apprenticeship embedded degree program. Right now, 1,299 students are pursuing AEDP courses in particularly commerce and home science. And from the current next academic year, 26-27, we are planning to increase it to 10,000 and across 10 subjects.
which I'll be talking on these two things in detail post-lunch session. And sir, during this period, sir, we have also conducted this placement drive, state-level placement drive with the help of BOPT, where 740 students got their placement, and MCL, Vedanta, and various BPOs have also recruited these people. 569 students got job in BFSI sector. We have also entered into partnership with the help of ENIT department, sir, with NUS Singapore to provide skill courses to our students, 375 students in the first phase, and 7,500 students will be covered over a period of 5 years. We have also a partnership with TCS, NSE, National Stock Exchange, Bajaj Finserv, and EduNet for creating employability pipelines directly from campus to industry. Career counseling and placement cells are also being established across all HEIs. Next slide, please. Sir, during NEP's previous. NEP's another mandate is internationalization of higher education. Sir, I would like to bring to kind notice, sir. At present, Odisha currently hosts 2,300 international students, which are largely by private universities. Our target is to have 10,000 foreign students by 2029, 25,000 by 2036, and 50,000 by 2047. And all universities, including private universities, have to collectively work to achieve this target. And state, we are working on having a policy to promote internationalization of the education also, sir. With the active partnerships with NUS Singapore, James Cook University, Australia, Northeastern University, Boston, and University of Tübingen, Germany, our universities are becoming global, sir. As I mentioned, sir, Videsh Shiksha Vritti also will send 50 SCST students annually to study abroad, sir. Next. Sir, when we talk of various aspirations and all, it is not a simple talks only. This slide will show how our shows our commitment in black and white. What we plan and with the measurable targets also. What we are targeting by 2029, 2036 and 2047. And these are all data are being regularly monitored at various level, at the level of Honorable Chief Minister, at the level of Chief Secretary, at the department level also. So, and we have also developed one academic audit. Odisha State Higher Education Council has developed an academic audit through which also we monitor the progress of these targets, sir. And for this academic audit, Odisha has received a copyright certificate for that purpose. So that shows that the original work done by ORSEC. Next. Sir, for way forward, sir, looking ahead, our 10 priorities are NAC and NIRF improvement across all institutions, targeting 50% accredited institutions by 2029, converting 5 of our universities to multiversities, establishing digital universities at Odisha State Open University and Revensa, creating the Odisha Institutional Ranking Framework, launching the Purpose Research Fund with industry, university, both private and public, partnerships, fast-tracking faculty recruitments, opening 4 new greenfield universities, introducing AI-monitored examinations, driving internationalization through EduCity master plan, and extending green energy and OSWAN broadband to all campuses, which Honorable Minister ENIT has also indirectly agreed to it, sir. So I express my sincere thanks for the same. Sir, for dedicated, next. For dedicated skilling initiatives, sir, as I mentioned, sir, 2 lakh of our more than 2 lakh students are on NESCOM platforms. 5,630 students have applied for fintech courses. TCS Youth Employability in 27 colleges are going on. And with the help of NSE and BOPT, we are placing students in BFSI sector also, sir. And as I mentioned, with the help of Skill Development Department, the Coursera and the Gubi are the few platforms which through which our students are learning skill courses, sir. Next. Honorable Prime Minister has said, we are modernizing the country's education system according to the needs of 21st century. Odisha stands fully committed to this transformation, not as a follower, but as a state that is leading from the front. I thank Honorable Governor, sir, Honorable Chief Minister, sir, for the resources, support and guidance that have made these achievements possible. I thank every Vice-Chancellors for their partnership. The government has built the foundation
Together we will build a Viksit Odisha by 2036 and a Viksit Bharat by 2047. Before I conclude, I seek approval of Honorable Governor Sir and Honorable Chief Minister Sir to show 3 of our small videos that we have prepared for this event, sir, which largely highlights on our internship program. The first video is of internship, what we have done during this last 1 month. ओडिशार उच्च शिक्षा क्षेत्र में आज एक नूतन अध्यायर सूत्रपात होईछि। छात्र छात्री माने एबे केवल पाठ्य पुस्तक रे सीमित नहांती बरं वास्तव जगतर अनुभूति साउंटिबाकू बाहरिछंती। मान्यवर प्रधानमंत्री दूरदृष्टि संपन्न मार्गदर्शन और मान्यवर मुख्यमंत्री संकल्पबद्ध नेतृत्व रे उच्च शिक्षा विभाग जातीय शिक्षा नीति NEP 2020 आधार रे आज शिक्षार एक नुआ दिगंत खोलिछि। राज्य उच्च शिक्षा विभागर इंटर्नशिप एवं गोष्ठीगत सेवा कार्यक्रम माध्यम छात्र छात्री माने हासिल करुछंती कार्य क्षेत्र रे अभिज्ञता, व्यवहारिक दक्षता, वृत्तिगत नैतिकता, नेतृत्वर गुण, गोष्ठी सहभागिता अभिज्ञता एवं वर्धित नियुक्ति योग्यता। आज एही अभियान सफलतार एक विराट उदाहरण साजिछि। आज छात्र छात्री माने सरकारी कार्यालय, शिल्प संस्था, आर्थिक अनुष्ठान, चिकित्सालय, विद्यालय, अंगनवाड़ी, पंचायत एवं सामाजिक संगठन पर्यंत विभिन्न क्षेत्र में निजर दक्षता प्रमाण करुछंती। वास्तव जगतर समस्या और संभावना को निकटरू अनुभव करे से माने आज अधिक आत्मनिर्भरशील और आत्मविश्वासी होई परिछंती। आज चतुर्थ सेमिस्टर प्राय 1.5 लाख अधिक छात्र छात्री एही इंटर्नशिप एवं गोष्ठीगत सेवा कार्यक्रम रे शामिल होइछंती। प्राय 89,700 छात्र छात्री विभिन्न क्षेत्र रे इंटर्नशिप रे अंशग्रहण करुछंती। 63,400 रु अधिक छात्र छात्री गोष्ठी सेवा बा सामाजिक सेवा क्षेत्र भित्तिक प्रकल्प बा फील्ड प्रोजेक्ट, सर्भे, NSS संबंधी कार्यकलाप एवं सामाजिक जनसंपर्क कार्यक्रम रे जड़ित अछंती। एबे छात्र छात्री माने केवल परीक्षा पाई पढुनांती, सेमाने निज स्वप्न को वास्तव रूप देवा पाई प्रस्तुत हेउछंती। मान्यवर प्रधानमंत्री समृद्ध भारत गठनर स्वप्न और मान्यवर मुख्यमंत्री ओडिशा रूपांतरण संकल्प को साकार करिबारे आगे चलीछि उच्च शिक्षा विभाग। एठी हमें शिखि परिबा पाठ और कर्मक्षेत्र भितरे कोन रहिछि पार्थक्य। खाली पाठ पढ़ले कोन हबो, कोठी व्यवहार हबो, केमिरे व्यवहार हबो सेटा जानिबा निहाती दरकार। A very big thank you to them because it is a really good initiative under the NP. शिक्षा देउछि प्रेरणा, दक्षता आणुछि रूपांतरण। आजिर सशक्त छात्र छात्री गढ़िबे समृद्ध ओडिशा। Sir, next video is on AEDP, sir, Apprenticeship Embedded Degree Program, where 2 years classroom studies and third year will be an industry attachment, sir. ओडिशार स्नातक छात्र छात्री मानकर नियुक्ति क्षमता वृद्धि, शिल्प भित्तिक दक्षता वृद्धि करने उद्देश्य ओडिशा सरकार उच्च शिक्षा विभाग एवं BOPT मिलित तत्वावधान आरंभ होईछि AEDP। भारतर मान्यवर प्रधानमंत्री एवं ओडिशार मान्यवर मुख्यमंत्री मार्गदर्शन में जातीय शिक्षा नीतिर नियमावली अनुसार यही अभिनव पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। AEDP कोर्स की वजह से हम लोग सिर्फ फ्रेशर्स नहीं रह जाते हैं, हम लोग जॉब के लिए रेडी हो जाते हैं। तो तब हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ, एफिशिएंसी के साथ बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। एही प्रोग्राम युवा मानक शिक्षा सहित शिल्प अभिज्ञता नियुक्ति सुजोग वृद्धि पाई संपूर्ण रूपे प्रस्तुत करिबार लक्ष्य नै आरंभ करा जायछि। एही प्रोग्राम अधीन रे छात्र छात्री माने प्रथम 2 वर्ष स्नातक पाठ्यक्रम अध्ययन करिवे एवं शेष वर्ष रे सेमाने उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्थिर करा जायथिबा प्रतिष्ठित कंपनी बा शिल्प संस्था रे अप्रेंटिस भाबरे प्रत्यक्ष कार्य अभिज्ञता हासिल करिवे एवं तत्सहित शेष वर्ष रे छात्र छात्री मानकु मासिक स्टाइपेंड मध्य प्रदान कराजिबो, जहाँ सेमानकु आर्थिक स्वावलंबी करिबारे सहाय्य करिवो। दीर्घ 2.2 अधिका हबो पिला माने +2 परे एइदर इंजीनियरिंग किंबा मेडिकल ता छडा अन्य कोनोसीटा को सेमाने चूज करू नथिले। वर्तमान जेतेबेले AEDP हमर शिक्षा व्यवस्था सहित जोड़ी होउची, पिला माने जनरल स्ट्रीम रे रही की भी तांकर जॉब अपॉर्चुनिटी
टा बढ़ी जाउछि सेथिपाई एटा निहाती जरूरी। गत वर्ष 2टी विषयर 6टी प्रोग्राम एवं 30टी शिक्षानुष्ठान यह आरंभ होइथिला। चलित वर्ष एहाको वृद्धि करा जाय मोट 11टी विषयर 15टी प्रोग्राम 81टी शिक्षानुष्ठान अंतर्भुक्त करा जायछि। एहा द्वारा अधिक छात्र छात्री उपकृत हेबे। एडीपी मोर कॉन्फिडेंस थिंकिंग एवं करियर डायरेक्शन सब सेट कर दे। यह निश्चित भाव में एक नुआ रिवोल्यूशन विप्लव सृष्टि कर शिक्षा क्षेत्र में एथरे तिले मात्र संजय। गत वर्ष एही कार्यक्रम रे प्राय 1300 छात्र छात्री एडमिशन नेथिले। एहार सफलता को देख चलित वर्ष 10,000 रु अधिक छात्र छात्री को शामिल करिबा पई बृहत लक्ष्य धार्य करा जायछि। एडीपी हमको आत्मनिर्भरशील हेबा पई प्रेरणा जगाउछि। एईडीपी ओडिशार उच्च शिक्षा क्षेत्र रे एक जुगान्तकारी परिवर्तन आनिबाकु जाउछि। So there's another small video, sir. It shows how the Honorable Chief Minister is pushing on developing infrastructure in higher education institutions, sir. Infrastructure. आज ओडिशार उच्च शिक्षा क्षेत्र देखुछि एक ऐतिहासिक परिवर्तन। दीर्घ वर्ष धरी अवहेलित होई पड़िथिबा महाविद्यालय और विश्वविद्यालय भित्तिभूमि को नुआ शक्ति, नुआ दिग एवं नुआ स्वप्न देवा पई आरंभ होईछि एक व्यापक परिवर्तन। मान्यवर प्रधानमंत्री शिक्षा और विकासर मूलमंत्र एवं मान्यवर मुख्यमंत्री सुदृढ़ नेतृत्व और राज्य सरकार संकल्पबद्ध पदक्षेप जोगु आज राज्यर शिक्षानुष्ठान गुड़िक पाउछि नुआ परिचय। राज्य बजेट रे 60 रु अधिक सरकारी कॉलेज एवं शिक्षक शिक्षा प्रतिष्ठानर भित्तिभूमि विकास पाई 2024-25 रे 62.58 कोटी टंका एवं 2025-26 रे 66.18 कोटी टंका मंजूर करा जायछि। केवल सरकारी नुहे अनुदान प्राप्त बेसरकारी महाविद्यालय गुड़िक मध्य सुदृढ़ करने को राज्य सरकार नैछंती ऐतिहासिक पदक्षेप। 2024-25 रे 326 टी कॉलेज पाई 342 कोटी टंका एवं 2025-26 रे 468 टी कॉलेज पाई 553 कोटी टंका प्रदान करा जायछि। ओडिशार विश्वविद्यालय गुड़िक विश्वस्तरीय करबा पई 17टी विश्वविद्यालय को 935.76 कोटी टंका मंजूर होईछि। सेहीपरि राज्यर 700टी महाविद्यालय रे छात्री मानक पई स्वतंत्र शौचालय एवं दिव्यांग शिक्षार्थी सुगम प्रवेश पई रैंप निर्माण निमंते मोट 45 कोटी टंकारु अधिक सहायता प्रदान करा जायछि। माओ प्रभावित अंचलर छात्र छात्री माने मध्य उन्नत शिक्षा सुविधारु वंचित न हुअन्तु सेथिपाई ग्रामोदय भित्तिभूमि योजना रे 32टी कॉलेज पाई 70.97 कोटी टंका मंजूर करा जायछि। एहा सहित मान्यवर प्रधानमंत्री दृष्टिकोण और भारत सरकार सहयोग रे पीएम उषा योजना अधीन रे ओडिशार 38टी उच्च शिक्षानुष्ठान पाई 676.7 कोटी टंका मंजूर होईछि। एही सहयोग ओडिशार उच्च शिक्षा को जातीय मानचित्र रे आहुरी सशक्त करुछि। आज ओडिशा रे शिक्षा क्षेत्र रे हेउथिबा एही व्यापक विनियोग केवल भवन निर्माण नुहे, एहा हेउछि युवपीढ़ीर स्वप्न रे विनियोग, एहा हेउछि ओडिशार भविष्यत रे विनियोग। Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity. With this, I conclude. Thank you. Thank you, sir, for that informative presentation. Ladies and gentlemen, we now proceed with the unveiling of the Chancellor's Cup. May I kindly request Dr. Rupa Roshan Sahu, IAS, Commissioner cum Secretary to Honorable Governor, to kindly take the session ahead. With your permission, sir, universities, affiliated colleges are centers of learning, excellence, and create future leaders. The Chancellor Cup has been and shall remain a symbol of competition, excellence, and demonstration of talent at a young age, recognized by the highest authority. Each one and anyone who has been a part of the higher education institutions in the state of Odisha has a fond memory of the cup.
either as a winner or somebody who could not make it, and certainly sees it as an achievement often more significant than any other in life. We are indeed indebted, joyed and committed to the vision of Honorable Chancellor as he reimagines the Chancellor Cup 2.0 in 3 categories: nation building, Odia and English debate. I request honorable dignitaries on stage, Honorable Chief Minister, Honorable Chancellor to unveil the Chancellor Cup, and request all present here to kindly stand in their wherever they are. Thank you. The Chancellor Cup 2.0, a work of Filgiri of Odisha, presenting the craftsmanship of Odisha and encouraging the future of Odisha towards excellence and achieving Vikasit Odisha and Vikasit Bharat. Sir, thank you, sir. Now is the time for the first Chancellor Cup tournament or competition and the results. On 3rd of November 2025, sir, under the chairmanship of Honorable Governor, with participation of Vice-Chancellors and other senior officials, with over 1,000+ higher educational institutions joined with us on hybrid mode, was held the first workshop on Nasha Mukt Bharat Abhijan. During the interactive session, students and other participants raised issues related to counselor training, rehabilitation support, enforcement, etc. Honorable Governor, terming drug addiction as a grave threat to youth and society, directed all higher education institutions to form a Nasha Mukt Abhijan committee and also announced a short film competition towards raising awareness. To that effect, sir, 70 colleges and universities from across the state participated. More than 300 students worked in various teams in tandem to create short films. 3 teams have been selected by a committee with Lok Bhavan Secretariat in collaboration with the Higher Education Department, following a transparent SOP for state-level Chancellor Award, and 7 teams will be given the Appreciation Award. We express our gratefulness to the dedicated effort of the department under the guidance of Honorable Minister and the effort of the Secretary of the Department towards helping us finalize the winners. Today, on 31st May, World No Tobacco Day, we are glad to inform that the awards for the first Chancellor Cup on Nation Building will be towards drug de-addiction and the effort of the students who have prepared the short films towards raising awareness. May I now request Honorable Chancellors, Honorable Governor, sir, Honorable Chief Minister, sir, and other dignitaries to kindly come forward for the distribution of the awards. We have 10 awards to be presented. All the 10 films have been exceedingly well, and it was not an easy task, sir, to finalize the first 3. But definitely we have to come to a point where we have to present the awards. The 10th award goes to Radhanath IASE Cuttack. It is a token of appreciation and encouragement. Rupees 10,000 check and a memento. Yes, sir. And a memento and the check, sir. Lingaraj Law College, Berhampur, number 9. Lingaraj Law College, Berhampur at rank 9.
Lingaraj Law College, Berhampur. They received rupees 10,000 in check and a memento. They have secured 325 marks in total. Followed by Khalikot University, Berhampur, rupees 10,000 and a memento. Khalikot University, Berhampur, 310 marks. Khalikot University, Berhampur. Followed by Berhampur University, Sikuli, rupees 10,000 and a memento. Berhampur University. Berhampur University. This is Berhampur University, Sikuli. Sinkuli. Berhampur University, Berhampur. Number 6, Berhampur University, Berhampur. They have secured 343 marks. May I request the audience present here to applaud the effort of the students. Autonomous College of Science and Technology, Odaspur, rank 5. Autonomous College of Science and Technology, Odaspur, rank 5. They also received rupees 10,000 and a memento. Autonomous College of Science and Technology, Odaspur. Followed by Andapur Anchalika Training College, Fakirpur, Keonjhar, rank 4. Rank 4, Andapur Anchalika Training College, Fakirpur, Keonjhar. They have received rupees 10,000 and a memento, and the total marks they had got was 353. Andapur Anchalika Training College, Fakirpur, Keonjhar. Coming to the state level awards, the third award goes to Ravinshaw University, Cuttack. So there are 3 state level awards. The third award is Ravinshaw University, Cuttack. Third prize of rupees 50,000 and a memento. Third prize of rupees 50,000 and a memento. Again requesting the audience for applaud. Ravinshaw University, Cuttack. The second prize goes to Odisha University of Technology and Research, OUTR. Second prize is Odisha University of Technology and Research, OUTR. A prize amount of rupees 75,000 and a memento. The prize amount of rupees 75,000 and a memento, hoping that the prize amount will go towards creating drug awareness in the campus. Odisha University of Technology and Research. Now coming to the first prize and most awaited prize, the state award for the Chancellor Cup on Nation Building. This year the theme being towards drug de-addiction in a campus free of drugs on World No Tobacco Day. Betanati Degree College, Mayurbhanj, first prize, rupees 1 lakh and the Chancellor Cup. A huge round of applause for the tremendous effort that the students have made, and the video also shall be played soon after. Betanati Degree College, Mayurbhanj, first prize, rupees 1 lakh and the Chancellor Cup.
Huge congratulations to the team and the university under which they come, the college, the institution, the faculty members, all who have encouraged towards preparing the video. The cup being a work of filigree art, may I request the guests to now kindly be seated. We shall now, in a moment, play the video. With your permission, sir, we place the video prepared by the best team, that is the Betanati Degree College, Mayurbhanj. अरे करिश्मा गोटे झील ना पुओ रे केजन झील ना पुओ मते तो लगे सेटा पुओडा बोली मते तो आउ किछि लागे झीलटा समस्ते कुहंती सत किंतु देखा तो जाय पुओ रंग और ढंगी भड़िया चाली की जिवो अरे करिश्मा गोटे पुओडा करिश्मा गोटे पुओडा गोटे पुओडा केही केही निजकु प्रतिदिन निजे लुचांती हस थाए मुहरे किंतु अंधार छाती भीतरे गोटिए मिछ संग होई आसे एटा खाइबे मो सबु ठीक हे जीवा गोटिए निस्ले तबले गोटिए निसा तबले गोटिए निसा तबले गोटिए हाथ गोटिए सांग गोटिए मुछि यथेष्ट कारण निशा नुहे मनीष ही सबको ही शक्ति कस आमे काठी हेबा आमे समर्थन करिबा विश्व परे मनीषकु बाछिबा करिश्मा पाई तके को नीरव योद्धा पाई गोटिए निशा मुक्त भारत पाई As we move ahead,
it is a matter of great honor to invite Sri Mohan Charan Majhi, Honorable Chief Minister of Odisha, for a special address. Sir, please. जय जगन्नाथ। माननीय राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कुंभमपति महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री श्रीयुक्त कनकवर्धन सिंहदेव महोदय, माननीय मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग महोदय, माननीय मंत्री श्रीयुक्त नित्यानंद गंड महोदय, माननीय मंत्री श्रीयुक्त सूर्यवंशी सूरज महोदय, माननीय मंत्री श्रीयुक्त संपत चंद्र स्वाई महोदय, एटी उपस्थित थिबा समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, उपस्थित समस्त विश्वविद्यालय सम्माननीय कुलपति वृंद, शिक्षाविद वृंद एवं गणमाध्यम समस्त बंधु माने एवं एटी उपस्थित थिबा अन्य समस्त नेतृमंडली, राज्य विश्वविद्यालय कुलपति ये सम्मेलनी 2026 अवसर रे आज ये पवित्र दिन एक ऐतिहासिक मुहूर्त एभली एक अवसर रे आज आपण माने समस्ते ये कार्यक्रम रे उपस्थित एवं आज मध्य ये कार्यक्रम रे मते आपण मानकर सहित मिसिबार जो सुजोग मिली ए अवसर रे आपण मानकु समस्तंकु मो तरफ अभिनंदन एवं शुभेच्छा। ओडिशार पवित्र ये ज्ञान भूमि रे विश्वविद्यालय समूह हेउछंती आम सामूहिक चेतना प्रज्ञा और स्वाभिमान ये हूँ महान प्रतीक। इतिहास साक्षी अच्छी जेतेबेले भी कौन सी जाति प्रगतिर शिखर को स्पर्श करिछि सेतेबेले तार मूलदुआ उच्चशिक्षा एवं बौद्धिक विप्लव उपर ही ये स्थापित होकरी आगक बढ़ी। आज ये ऐतिहासिक अवसर रे आसंतु आमे आमर गौरवमय अतीतर प्रेरणा नहीं एक एभली स्वाभिमानी और ज्ञानभित्तिक समृद्धि और विकसित ओडिशा गठनर आमे समस्ते संकल्प नेबा जहाँ विश्व दरबार रे निजर श्रेष्ठतार प्रतिपादन करी ओडिया परिचय को ओडिया अस्मिता को एक स्वर्णिम शिखर को आमे नहीं जिबा। शिक्षा होची समाजर मेरुदंड एवं उच्च शिक्षा होची सामाजिक विकासर प्रकृत ये होची चाबिकाठी। यही सम्मेलन केवल एक आलोचना चक्र ये नुह बरं ओडिशार आगामी पीढ़ीर भविष्य गठन पाई यह निश्चित भाव रे आम समस्तंकर पाई एक महायज्ञ। आमको शिक्षा व्यवस्था रे एभली संस्कार आनिया पाई पड़िबो जहाँ छात्र छात्री को केवल ज्ञानी नुहे बरं समाज प्रति संवेदनशील एवं दायित्ववान करिबारे ये मुख्य भूमिका निर्वाह करिवो। जदि प्राथमिक शिक्षा जड़े विद्यार्थीर फाउंडेशन भावे गणा हुए तेबे उच्च शिक्षा होउची एक सुपर स्ट्रक्चर जेबड़ी उभय फाउंडेशन और सुपर स्ट्रक्चर ये समाहार रे एक सदनर रूपरेख ये संपूर्ण भाव रे तैयारी होता है। ठीक सही बड़ी भाव में गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा और गवेषणा भित्तिक उच्च शिक्षा जड़े मनीषर जीवन को ये सार्थक आनी था। स्वाधीनतार प्रथम 65 वर्ष मध्य भारतर उच्च शिक्षा
ब्रिटिश अमलर चिराचरित शिक्षा पद्धति उपर आधारित थिला आउ जहा केवल चाकरी सर्वस्व होई रही जाइथिला। ये कथा मध्य आमे समस्ते प्रायतः एयरनेस होइछंती एवं जानिछंती मध्य अतीत को रमंथन मध्य करिछंती। अनेक आलोचना समालोचना ये समस्त भितरे आमे जेतेबेले इंग्रेज मानकर द्वारा शिक्षा पद्धति ये भारत वर्षरे स्वाधीनता पूर्वरु भारतीय लोक मानंकु किभଳି भाबरे इंग्रेज मानकर एक मानस संतान हिसाब रे निर्माण करिबा एवं एक कुटिल जो पद्धति लागिथिला ये स्वाधीनतार 75 वर्ष पर मध्य आज तार अनुभूत आम पाखरे अछि आ जोथि पई आज आमको स्वाधीनता मुक्त होई आगु को बढ़िबार ये समय आज आमको मुक्त करिकि आगु को नेबा पई एक पथ प्रदर्शक हिसाब रे जाउछ। आम समस्तंकर मने थिबो सेदिन जेते बेले युवक लॉर्ड मैकेले भारत वर्ष को परिदर्शन रे आसीथिले स्टडी करिया पई आसीथिले एवं सेते बेले से एठी रिपोर्ट तैयारी करी निजर पिता को सेदिन से लिखिथिले सेति पई एवं से चिठी रे लिखिथिले निज पिता को पई लोकमानंकर गोटे एपरी वर्ग निर्मित हो देखिबारे शरीर रु जी भारतीय होइथिबो एवं रुचि विचार मन आ बुद्धि रे संपूर्ण भाव रे इंग्राजी होइथिबो एवं ये चिठीर सार तत्व मर्म यदि आम देखिबा ताहले आज भी स्वाधीनतार 75 वर्ष अतिबाहित हैला परे आज मध्य जो शिक्षा पद्धति को आधार करी आमे आम भारत वर्ष रे आमे आग को बढ़िया पाई चिंता करूछंती सेथिरे केवल एक इंग्रेज मानकर द्वारा लॉर्ड मैकलेंकर द्वारा इम्प्लीमेंटेशन करा जाइथिबा सेही कुटिल शिक्षा पद्धति भितरे केवल भारतीय मानंकु केवल निजर स्वार्थरे नियोजित करिवार ये चित्र ये शिक्षा भितरे निहित होइकी अछि ये कथा हमें समस्त जानी छंती। एनु समय परिवर्तन हेबा एवं आज जेभଳି भाबरे गोटाए शिक्षार व्यापक भाबरे परिवर्तन हेबा पाई निजर संस्कृति साहित्य ऐतिह्य ये परंपरा को एवं निजर स्वदेशी ज्ञान को गुरुकुलर शिक्षा पद्धति को ये समस्त को आधार कर जेते बेले आज परिवर्तन आड़ को आम जाउचंती आज किंतु माननीय प्रधानमंत्री देशर शासक क्षमता ये संभाळिला परे ये भारत वर्षर दायित्व नेला परे संपूर्ण भाव में शिक्षा व्यवस्था को व्यापक भाव में अमूलचूल परिवर्तन करवा एवं सबुठारु बड़ गुरुत्वपूर्ण भूमिका नेबा अर्थात गवेषणा को गुरुत्व देवा एभली एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नेबा निश्चित भाव में आज दिन में आमको गोटाए शुभ संकेत आगामी दिन में भारत विश्वगुरु बनिबा पई बजेट रे गवेषणा पई नगण्य प्रावधान रखा जाउथबा पूर्वरु आज दिन में जेते बेले आमे देखिबा चलित बजेट रे नूतन शिक्षा नीतिर उद्देश्य सहित आज 1 लाख कोटी टंकार बजेट रे प्रावधान करवा ये निश्चित भाव में आगामी पीढ़ी पाई आगामी दिन पाई शिक्षा क्षेत्र में एक नूतन संकेत मध्य ये दउछि। आम सरकार दायित्व ग्रहण करने पर 2024 अगस्ट मासरू राज्यर जातीय शिक्षा नीति को ये कार्यकारी करा जाउछि। यह केवल एक सरकारी दस्तावेज नुहे बरं आम युवपीढ़ीर स्वर्णिम भविष्य गठनर एक जातीय मिशन सेमानकु सर्वोत्तम एवं अंतर्जातीय मानर शिक्षा प्रदान पाई एक नुआ प्रयास आरंभ करा जायछि। आज ओडिशा शिक्षा क्षेत्र में केवल अन्य राज्य मानकर सहित आम ओडिशा समकक्ष ही नहीं बरं एक समृद्ध शिक्षा व्यवस्था रे एक नुआ नेतृत्व नहीं आगो को अग्रसर होछि। चलित आर्थिक वर्ष रे आम राज्य सरकार उच्च शिक्षा बजेट रे एवं शिक्षा बजेट रे मध्य जेभଳି भाबरे आमे याको बहुत प्राधान्य देइछु। आर्थिक वर्ष 2025-26-27 पाई जदि आमे देखिबा विद्यालय एवं गणशिक्षा विभाग पाई
सर्वाधिक रेकर्ड 31,997 कोटी टंका एवं उच्च शिक्षा विभाग पर 3,664 कोटी टंका, दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा पर 1,823 कोटी टंका एवं यह सहित मध्य आमर स्वास्थ्य क्षेत्र रे एवं अन्यान्य क्षेत्र को जदि आम मिसेबा ताले समुदाय विभिन्न विभागर ये शिक्षा क्षेत्र में समुदाय बजेट प्रावधान आज दिन में रेकर्ड 42,565 कोटी टंकार बजेट को जहाँकि आम समुदाय बजेट रो 13.7% आमे रखिछंती। एते बड़ बजेट एते बड़ चिंताधारा केबे कौन सी बजेट रे आज पर्यंत तैयारी करा जाई नथिला एवं यह होची मध्य राज्य जीएसडीपी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रो ये होची 3.8% अटे जहाँकि ये मध्य सर्वकालीन एक रेकर्ड। एणु निश्चित भाव में आज आम सरकार शिक्षा को सबुठारु अधिक ये प्राथमिकता आज आमे समस्ते आज देइछंती। निश्चित भाव में एथिरे प्राथमिक शिक्षा ठू आरंभ करी उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय गुड़िकर सर्वांगीन विकास नूतन प्रजुक्ति विद्यार सफल प्रयोग भित्तिभूमिर सुदृढ़ीकरण पाई यही बजेट रे स्वतंत्र भावे एथिरे आलोचना करिकरी ये बजेट को स्वतंत्रता दिया जाइछि जोठिकी आज दिन में आमे बजेट रे समस्त को जो माने बुद्धिजीवी जो माने शिक्षाविद जो माने बजेट अर्थ उपरे जहार अधिक ज्ञान अच्छी समान को आह्वान करिकरी बजेट केमिति हवा उचित शिक्षा ता भितर केमिति शिक्षा बजेट रहिबा उचित स्वास्थ्य बजेट केमिति हवा उचित भित्तिभूमि आम ओडिशा रे आज दिन में कौ बड़ी भाव आवश्यकता हवा उचित या आधार करिकरी समस्तंकर परामर्श नेबा ऑनलाइन रे परामर्श मागिबा ये प्रकार गोटे स्वतंत्रता आज आम सरकार आसिला परे नूतन चिंताधारा रे आम आज काम करी चली आमर यही महान प्रयास निश्चित भाव में ओडिशार शिक्षार व्यवस्था को एक नुआ दिग्दर्शन देव एवं शिक्षार्थी मानक एक उत्तम आधुनिक सुविधा जोगई देबारे आज आरंभ होईछि एक वैप्लविक एभली एक शिक्षा क्षेत्र में ओडिशार शैक्षणिक विकास पई आज मध्य आम नुआ नुआ योजना नेबारे आरंभ करिछु एथिरे नुआ योजना नेबारे आम पछघुंचा देना हूँ एथिपाई केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर भद्रक एवं झारसुगुड़े उच्च शिक्षा क्षेत्र में अधिक व्यापक करने 4टी नूतन विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा करने आम घोषणा करिछु एवं बजेट रे मध्य तार प्रावधान रखिछु। यह सहित पारादीप बलांगीर 2टी नूतन इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी एवं मयूरभंज एवं बलांगीर 2टी नूतन कृषि विश्वविद्यालय कृषि महाविद्यालय प्रतिष्ठा करने आम सरकार निष्पत्ति नहीं यह युवपीढ़ी वैषयिक तथा कृषि शिक्षार एक नूतन सुजोग सृष्टि करिबारे सहायक निश्चित भाव में हो पार। शिक्षा सहित स्वास्थ्य और प्राणी सेवा क्षेत्र में आम पछरे नाहू से आम सरकार आसिला परे आमे पश्चिम ओडिशार चिपिलिमारे प्राणी चिकित्सा एवं सोनपुर रे मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय एवं तार सहित मध्य गजपति मालकानगिरी रायगड़ा जोटी अति पछुआ अंचल एवं आदिवासी अंचल अच्छी से अंचल 3टी नूतन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा करा सहित नयागढ़ और नुआपड़ा 2टी नूतन होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा हो जहाँ ग्रामीण इलाकार गवेषणा चिकित्सा सुविधा को अत्यंत सुदृढ़ करिबारे ये सहायक हो पार। ये प्रकार आम सरकार चिंताधारा भितर आम शिक्षा क्षेत्र में गोटे वैप्लविक परिवर्तन आने जो चिंता रखीचु ता निश्चित भाव में आगामी दिन में गति और शक्ति देव। आम शिक्षा को केवल पाठ्यपुस्तक मध्य ये सीमित न रखी यह व्यावहारिक एवं रोजगार भित्तिक करने को आम सरकार संपूर्ण भाव में संकल्पबद्ध अच्छी। यही क्रम में राज्यर प्रथम थर पर 1,18,000 ऊर्ध्व स्नातक छात्र छात्री मानक इंटर्नशिप सुजोग प्रदान करा जायछि। यह सहित अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री पाठ्यक्रम माध्यम तृतीय वर्षरू छात्र छात्री मानक प्रशिक्षण सह आर्थिक सहायता देवार व्यवस्था आम सरकार करिसेंती। युवपीढ़ी नवसृजन को इनोवेशन को प्रोत्साहित करने राज्य स्तरीय स्टार्टअप प्रतियोगिता आयोजन करा जाई श्रेष्ठ 10टी प्रकल्प को
50 लाख टंकार आर्थिक ये सहायता मध्य आम सरकार जोगे देइछंती। एथिसह मातृभाषा उच्च शिक्षार प्रसार पाई इग्नू सह चुक्ति साक्षर कराଯାଇ विभिन्न उच्चतर पाठ्यक्रम को ओडिया भाषा रे मध्य रूपांतरित करी तार उपलब्ध करा जाउछि। उच्चतर पाठ्यक्रम रे भाषा आउ केबे बाधक साजिब नाही, बेले बेले बहुत बाधक साजी थाए। ताहार मध्य ये जातीय शिक्षा नीति 2020 इम्प्लीमेंटेशन हला परे आमे ओडिया छात्र छात्री ओडिया माध्यम रे उच्च शिक्षा देबा पई गोटे बड़ सुजोग आज आनी पारिछंती। विश्वविद्यालय गुड़िक केवल डिग्री प्रदान खाली केन्द्र नुहंती, बरं यह इनोवेशन बा नवसृजन और उच्चकोटीर गवेषणार एक प्रयोगशाला। मुख्यमंत्री गवेषणा नवसृजन फेलोशिप माध्यम प्रतिवर्ष 300 गवेषकों को आर्थिक प्रोत्साहन आम सरकार जोगे दौरान। आम छात्र छात्री माने जलवायु परिवर्तन, जनस्वार्थ एवं फिनटेक भरी आधुनिक क्षेत्र में गवेषणा करी अंतर्जातीय स्तर में पत्रिका गुड़िकर स्वीकृति पाइबा सह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रे सफलता अर्जन करी ओडिशार गौरव को से बढ़ाई पारिछंती। आज आम राज्यर उच्च शिक्षानुष्ठान गुड़िक युवपीढ़ी को सशक्त करी सेमानक स्वर्णिम भविष्य निर्माण दिगरे एक प्रमुख भूमिका निर्वाह से करि आसुछंती। राज्यर जातीय शिक्षा नीति 2020 सफल रूपायन सह आज पीएम उषा योजनार कार्यान्वयन एवं महाविद्यालय नथिबा उपांत संख्या अर्थात 32 पाखापाखि नुआ सरकारी कॉलेज मध्य प्रतिष्ठा करा जायकरी ये शिक्षार गोटे बड़ विकेंद्रीकरण करिबारे मध्य बड़ भूमिका आज आम सरकार ग्रहण करि पारिछंती। एथिरे पीएम उषारे आज स्वतंत्र भावे प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यही योजना माध्यम विश्वविद्यालय और महाविद्यालय गुड़िक विश्वस्तरीय शिक्षा केन्द्र भावे गढ़ी तोड़िया आम सरकार आज संकल्पबद्ध अछंती। सेथिपाई योजना खाली भित्तिभूमि पाई नुह बरं एनईपी 2020 अनुजाई आम युवपीढ़ी को एक शताब्दीर कौशल दक्ष करने ये गोटे हूँ सबुठारु बड़ माध्यम। केंद्र और राज्य सरकार एथिपाई मध्य 676 कोटी 70 लाख टंका खर्च मध्य करुछंती एवं विभिन्न विद्यालय को आम टार्गेट करी ये क्षेत्र में अधिक ध्यान केंद्रित करिछंती। आप माने जानिथिबे 2024 अगस्त मासरे आमे जातीय शिक्षा नीति को आम ओडिशा रे लागू करलु, किंतु जातीय शिक्षा नीति 2020 अर्थात 2020 रे ये लागू होगा कथा भारत वर्ष जिते बेले सारा भारत वर्षर विभिन्न राज्य रे लागू करले आम सरकार तत्कालीन आम सरकार सेते बेले याकू लागू करले नहीं। उद्देश्य कौन थिला? आम पिला मानकर भविष्य से तो खेल करिवार जो अभिप्राय रखा जायतला सेठिरे आम पिला मानकर क्षति हेई नहीं कि 2000 लागू होगा कथा 2024 अगस्त रे आमे लागू करलु। आम सरकार आसिला परे यही जो 5 वर्षर व्यवधान गोटे दिनर व्यवधान रे केते पछकु जने जूनियर सीनियर हो जाउछ। 5 वर्ष व्यवधान फल आज एभली एक परिस्थिति आसी जो कि आम पिला माने बहुत पछरे आज अछंती। आमको तांको पारालाल बा इक्वाली समान को से स्तर को आज नेबा पई पड़िबो। आ सेथि पई केबे भी कौन सी सरकार ये राजनीति ऊर्ध्वरे रहीकरी शिक्षा क्षेत्र में कहा सहित केबे भी सालिश करबा कथा नुह जे एथिरे राजनीति जड़ित करी आमे लागू न करबा आउ सेथि पई 5 वर्ष पछकु ठेली होई जिबा। ये निश्चित भाव में तापाई आमको कठोर परिश्रम करिया पई पड़ी कि ताकू जो समय अवधि आम पाई लॉस होइछि ताकू पुनी किभली भाव में ताकू माने पुनर्स्थापित करी आगु को जीवा ये गोटे बहुत बड़र आम पाखे आज चैलेंज होकर आज छिड़ा होइछि। आ सेथि पई पीएम उषा सहित विभिन्न प्रकार कार्यक्रम सहित आमे याकू तुरंत जोड़िक से स्तर को नेबा पई मध्य व्यापक भाव में आज आम सरकार याकू गुरुत्व आरोप करुछंती। विश्वविद्यालय गुड़िकर सहायता रक्षा करने सह नियुक्ति प्रक्रिया रे संपूर्ण स्वच्छता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने ओडिशा विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2024 एवं शिक्षक नियुक्ति रे सबु वर्गर समान प्रतिनिधित्व पाई ओडिशा राज्य सरकारी विश्वविद्यालय शिक्षक कैडर संरक्षण अधिनियम
ताकू मध्य आम सरकार ताकू प्रयन करिसेंती। अनुसूचित जाति जनजाति परिवार मेधावी प्रतिभा माननकु विश्वस्तरीय सुजोग देवा पाई मध्य 50 लाख टंका पर्यंत विदेश शिक्षावृत्ति योजना ताहार आम सरकार शुभारंभ करिसेंती एवं ताहार संपूर्ण भाव में समाने किबड़ी भाव में समाजर मुख्य स्रोतरे सामिल हो पारिबे भविष्यत तैयारी करने सहित सामाने संपूर्ण भाव में ये ओडिशा को यशस्वी करार भूमिका नहीं पारिबे ताकू आज आम सरकार गुरुत्व आरोप करिसेंती। ता सहित मध्य मुख्यमंत्री गवेषणा नवसृजन फेलोशिप पर्यंत जदि आम देखा ताहले तल स्तर जदि आम जीवा ताहले शिशु बाटिका आज प्रथम थर कहीं जो जातीय शिक्षा नीति 2020 लागू है आज आम राज्य में मध्य आम शिशु बाटिका खोली प्रथम शिशु बाटिका 1 एवं 2 आज अंगनवाड़ी केन्द्र में पूर्ववत चालू रही। शिशु बाटिका 3 आज प्राथमिक विद्यालय स्तर में आज शिशु बाटिका 3 हिसाब से प्री स्कूल हिसाब से मध्य ताहा आज मानवर एठी गणशिक्षा मंत्री कहते 45,000 रु अधिक ये विद्यालय मानक आज लागू होईछि एवं लागू होगा द्वारा आमे सेतिरे समान को निपुण ओडिशा ये योजना माध्यम समान को निपुण करने पाई समान को किभली भाव में प्रैक्टिस करवा तांकर मानसिक वृद्धि घटेबा ये प्रकार कार्यक्रम आज आम शिक्षक माने ताको ये कार्यक्रम को आगे नौछंती। सेही बड़ी भाव में प्राथमिक विद्यालय गुड़ी को किभली भाव में सज्जित करवा भित्तिभूमि स्थापना करवा मैन पावर को वृद्धि करवा आपण माने एक कथा भी समस्ते अनुभव करिसेंती जेतेबेले आमे प्राथमिक विद्यालय कथा चिंता आम सरकार आज आसिला परे करूचंती। विगत दिन में आम सरकार आसिया पूर्व जदि आप देखिथिबे ताहले आमे पूर्व सरकार 5T रूपांतरण कथा चिंता कले उच्च शिक्षा कथा छाड़ीदेले प्राथमिक शिक्षा कथा छाड़ीदेले उच्च शिक्षा कथा 5T रूपांतरण में निमज्जित रहिले ये उद्देश्य प्रणोदित भाव में जदि आम फाउंडेशन स्ट्रक्चर मूल भित्ति जदि स्ट्रंग नथिबो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था जदि विपर्यस्त अवस्था थिबो ताहले आम पिला माने उच्च शिक्षा गला बेले कौ परिस्थिति आज सम्मुखीन होउचंती आम शिक्षार गोटे व्यापक व्यवस्था कथा कहउचंती जो थे प्राथमिक शिक्षार नियोजित थिबा आम पिला मानकर भविष्य सहित जो माने खेल खेलुतिले उच्च प्राथमिक गला बेले हरण गुणन मिश्रण फेडाण सूत लेखन जानी पारु नथिबा परिस्थिति आज भी आमे से स्तर आगक बढ़िया चेष्टा तो करुँच किंतु से स्थिति आज भी पूरा सुधारी नहीं से व्यापक भाव में नियुक्ति शिक्षक नियुक्ति करवा एवं समान को आउ सेठी स्कीमाटिक टीचर किंबा कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर ठिका शिक्षक नियुक्ति न करी सीधा सड़क रेगुलर शिक्षक नियुक्ति करिवार ये परंपरा आम सरकार आरंभ करिसेंती एवं पाखापाखि 22,000 रु अधिक शिक्षक नियुक्ति करी या उपरे गोटे व्यापक परिवर्तन आज आम सरकार ए पर्यंत 2 वर्ष पूरी नहीं किंतु व्यापक निष्पत्ति आम सरकार नहीं काम आरंभ करिसेंती। एणु आमको आज भित्तिभूमि देखा पड़ो एवं से आमे निपुण ओडिशा सहित जो पुरातन विद्यालय गुड़िक अच्छी ऐतिह्य विद्यालय हिसाब से प्रतिष्ठा करवा PM श्री लागू करवा तापरे PM उषा सहित आमे मुख्यमंत्री गवेषणा नवसृजन फेलोशिप पर्यंत ये प्रकार व्यापक भाव में प्रत्येक क्षेत्र में स्टेप बाय स्टेप जदि आमको ये जीवाई पड़ो एवं गत 24 वर्ष कहतु गत 50 वर्ष कथा कहतु ये समय अवधि भितर जदि शिक्षा को जदि या मूल बेसिक नीड्स हिसाब से आवश्यकता बा ये मानव संबल को जदि आम सरकार माने दे आसी थांते आज आम हलन गणन मिश्रण फड़ाण कथा आलोचना करने आम पाखे आउ ए कथा आलोचना कर आवश्यकता नथिला। समय आज परिवर्तन होती कम समय रे बहुत काम आमको चैलेंज भाव नहीं काम करने पड़ो आउ से आज आम सरकार निरंतर भाव में या एक बड़ उद्यम भाव में ग्रहण कर आग को बढ़ुंट कैंपस रे छात्री मानकर एक सुरक्षित भय मुक्त एवं स्वाभिमानी वातावरण सृष्टि करने सह समान को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देवाई आमे आमर कार्यक्रम आरंभ करिछु आमे शक्तिश्री योजना आरंभ करिछु जोठारे स्थायी शक्तिश्री सशक्तिकरण केन्द्र एवं ताहा सहित शक्तिश्री साथी शक्तिश्री संयोजिका और शक्ति अपा मान छात्री मानकर सुरक्षा एवं मार्गदर्शन दायित्व मान नेबा आज आरंभ करा जायछि।
सेहीभଳି ଭାବରେ नास्कम ଓ कर्सेरा सहभागितारे 30,000 रु अधिक युवक युवती मानक विश्वस्तरीय शिल्प उपयोगी दक्षता इंडस्ट्री रेडी ये प्रदान करने जो आम पदक्षेप नौचु आउ से स्तर में जिते बड़े उद्योगी माने आसबे से कैंपस रे आसिक पचारे से इंडस्ट्री रेडी थिबा पिला माने जदि रेडी थे ताले संगे संगे तांको अपॉइंटमेंट देबे ये प्रकार स्थिति आज ओडिशा रे आमे तैयारी करिछु। मु गत सप्ताह पूर्व जिते बड़े जाइथिली आमर ए खर्दा निकटवर्ती एक आना ड्रम एक शिल्प को देखिया पई जाइथिली एवं सेदिन मध्य किभଳି भाबरे सेठी ड्रोन तैयारी होउची एवं देखिला परे मो मन खुशी हेई गला। आज ओडिया पिला माने ड्रोन तैयारी करूछंती जो ड्रोन ऑपरेशन सिंदूर समय रे पाकिस्तान रे नियोजित करा जाइथिला एवं एइठु भुवनेश्वर 7टी ड्रोन जाइथिला एवं 500 किलोमीटर पर्यंत पाकिस्तान भितर पशिकी सेठी बॉम्बिंग करी सुरक्षित भाव में फेरी आसवा आम ओडिया पिला मानकर जो ये टेक्नोलोजी ताकू प्रयोग करवा आज निश्चित भाव में एक रेकर्ड करिछि। एबे 500 ड्रोन तैयारी होउछि सेठी अनेक प्रकल्प आज तैयारी होउछि खोर्धा अंचल रे एवं से पिला माने वर्ल्ड स्किल सेंटर रु एवं अन्यान्य प्रोजेक्ट रे मध्य जो मानकू आज आमे आम भुवनेश्वर जो वर्ल्ड स्किल सेंटर आम कर दक्षता आज जेपरी भाव में निपुण करुँच से आज भारत वर्ष रे कौन विश्व रे तांकर श्रेष्ठता प्रतिपादन करिबारे पछौ नाहंती। गत वर्ष से जाइतिले यूरोप को फ्रांस लियन सहर में प्रतियोगितार भाग नहीं आमर ये ओडिया पिला माने भारत वर्षर पिला मान सहित सिलेक्शन होकरी एवं मेडाल नहीं आसी 3टी पिला। चलित वर्ष से ऑल इंडिया कंपिटिशन रे 57 जन से पुरस्कृत होती इंडिया रे प्रतियोगिता रे ओडिशा चैंपियन हला एवं चलित वर्ष से चाइना को जाउछंती ऑल इंडिया कंपिटिशन रे भाग नेबा पई ये स्तर रे आज मध्य आमे पछरे नाउ आउ आगो को धीरे धीरे आम शिक्षा व्यवस्था रे वैषयिक शिक्षा व्यवस्था रे समान को दक्षता करिबारे आगो को आमे आज बढ़ी पारुछंती। एनु निश्चित भाव में एथिरे मु आपण मानकु समस्त को आज एते बेले बड़ आह्वानर आज सामना करिया पई पड़ुछि से क्षेत्र में किभଳି भाव में आम पिला माने प्रतिटी क्षेत्र में राज्य स्तर में हो जातीय स्तर में हो किंबा विश्व स्तर में हो आम पिला माने रेडी हेबे प्रतियोगिता रे प्रति आह्वान को मुकाबला करिवे आ सेथि पई आमे समस्त प्रकार व्यवस्था सहित आम छात्र छात्री व्यावहारिक ज्ञान विकास पई बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग BFSI अर्थात बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गुरुत्वपूर्ण चुक्ति स्वाक्षर करा शिक्षक प्रशिक्षण को आधुनिक करने इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEF सफलतार सहित आज आम सरकार लागू करि पारिछंती। मु अत्यंत आशावादी जे आमर माननीय राज्यपाल तथा कुलाधिपति महोदय मार्गदर्शन द्वारा उच्च शिक्षा क्षेत्र में सारा विश्व में एक प्रमुख केन्द्र हिसाब से आज साजिबा जाऊँ शिक्षा व्यवस्था यही सहभागिता आम राज्यर एक अभूतपूर्व शिक्षा विप्लव ये सूत्रपात कर आगामी पीढ़ी स्वर्णिम भविष्य गठन कर। आज उच्च शिक्षा विभाग कमिशनर एठी आमको तथा आम शासन सचिव एठी उपस्थापना करले प्रेजेंटेशन देले एवं जो प्रेजेंटेशन आज आम पाखे रखिंट ताहा निश्चित भाव में अत्यंत प्रभावशाली थिला एवं से आधार में आमको आहरी आगू को जावाई पड़ो। एथिरे विभाग विभिन्न सफलता एवं प्रचलित योजना गुड़िक विस्तृत विवरणी प्रदान करा जायछि। एही सफलता पाई मो आमर उच्च शिक्षा मंत्री माननीय सूर्यवंशी सूरज महोदय को मध्य एवं तांकर अधिकारी समस्त को मो आंतरिकतार धन्यवाद मध्य प्रदान करुछि। आमर मुख्य लक्ष्य होउछि 2036 एवं 2036 सुधा आमे समृद्ध ओडिशा एवं 2047 सुधा विकसित ओडिशा तथा विकसित भारत ये गठन करिबा एवं सेथिपाई आमको आज प्रस्तुत होगापाई पड़ो। 2036 ये 2026 रे आज आम अच्छा 2036 हूँ आगामी 10 वर्ष ये 10 वर्ष आम समृद्ध ओडिशा गठन करिबा एवं सेथिपाई ओडिशा को स्वतंत्र भावे आगो को नेबा एवं यह आम स्वतंत्र
ओडिशा प्रदेश गठनर 100 वर्ष पूर्ति जितेबले आम पालन करवा सेतेबेले आम ओडिशा को आम किभली भाव में देखा चाहिए मो स्वप्नर ओडिशा मो प्रस्तावर ओडिशा ये कथा को जितेबले आम चिंता करुवा निश्चित भाव में आम पाखे नवसृजन सृष्टि तो हम एवं ता सहित आम चिंता करवा दरकार जे किभली भाव में मो ओडिशा हो 2036 मसीहारी एवं 2036 जदि आम समृद्ध ओडिशा निर्माण में सक्षम हो पारे ताहले 2047 विकसित ओडिशा विकसित भारत आम जितेबले काम करवा विकसित भारत ओडिशा से ग्रोथ इंजिन रो काम करुव से एक बड़ चैलेंज को लेकर आम आग को आज बढ़ुंट एक एभली एक ऐतिहासिक अवसर आमको आज मिली तार सदुपयोग आम करवा सरकार करेंगे आम करवा समस्त सहभागितार आम आम राज्य को शिक्षा संस्कृति ज्ञान कौशल एवं अर्थनैतिक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ करने आमको एवं ठार ही एक दूरदृष्टि संपन्न रोड मैप प्रस्तुत करी आग को बढ़ावाई पड़ो एवं से आम सरकार ये आरंभ कर सारी आम समस्त सहयोग आगामी दिन में आम मोदीजी स्वप्न को साकार करवा विकसित भारत @2047 यही महान संकल्प ए सामिल अच्छी ए संकल्प को आम सिद्धि रे परिणत करवा ये प्रकार बड़ उद्देश्य लेकिन जाऊँगी एवं आज ये कर्मशाला आज ये वर्कशॉप ये सम्मिलनी आमको निश्चित भाव में बहुत बड़ा दिग्दर्शन देव आपाई मु महामहिम राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देवी जे एभली एक आज आमको अवसर देइचंती आगु को बढ़ावाई एवं आमर संकल्प को सिद्धि रे परिणत करने यह निश्चित भाव में सेतेबेले आमे सिद्धि रे परिणत होइतिबा सेतेबेले आमे अनुभव करवा जे स्वाधीनतार 7 वर्ष जितेबेले पालन करुवा सेतेबेले आमर महान लक्ष्य ये निश्चित भाव में आगु को बढ़ी पारिबो एवं आम समस्त विश्वविद्यालय गुड़िक ये जितेबले सफल नेतृत्व दे पारिबा आम भाविया जे ये मनीष तैयारी कारखाना ये निश्चित भाव में नव उन्मेष और प्रतिभार विकास को बहु आग को उच्च शिखर को आम नहीं पारिबो आज ये गरिमामय मंच में महामहिम राज्यपाल द्वारा चांसेलर कप रो शुभ उन्मोचन होइछि यह ओडिशार छात्र समाज मध्य सुस्थ प्रतियोगिता मनोभाव सृष्टि करने एक अभिनव एवं नूतन उत्तम प्रयास यही अभिनव परिकल्पना मु राज्यपाल तथा कुलपति महोदय को साधुवाद जनाउछि यही अंतर्गत जातीय गुरुत्वपूर्ण प्रसंग इश्यू ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस उपरे आयोजित होगा प्रतियोगिता आम छात्र छात्री मानक देश विकास और आह्वान संपर्क में निश्चित भाव में आगामी दिन में सचेतन कराइब यह सेमानकर विश्लेषणात्मक चिंताधारा को वृद्धि करिब एवं जातीय संहति तथा देश गठन प्रक्रिया रे सेमानकर सक्रिय अंशग्रहण को निश्चित भाव में सुनिश्चित करिब यह सहित इंग्राजी वक्तृता पई चांसेलर कप आम छात्र छात्री विश्वस्तरीय जोगाजोग दक्षता वृद्धि करिबारे यह मध्य बेस सहायता करि परिबो आज प्रतियोगितामूलक विश्व में निजर मतामत को स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग उपस्थापन करने कुलाधिपति कप शिक्षार्थी मानू एक सुंदर सुजोग एवं ये जो मंच आज प्रदान करिछि आगामी दिन में आम पिला को आहरी अधिक दक्षता एवं आग को बढ़ाइबारे बड़ भूमिका नहीं पारिबो सेहीपरि आम मातृभाषा ओडिया वक्तृता पई चांसेलर्स कप आयोजन आमर साहित्य संस्कृति और भाषार सुरक्षा दिगरे एक प्रशंसनीय पदक्षेप ओडिया भाषार गरिमा को बजाय रखिबा सह शिक्षार्थी मानक मध्य मातृभाषा प्रति आदर एवं निजर चिंताधारा को ओडिया रे प्रकाश करिबारे कला को यह निश्चित भाव में आहरी आग को समृद्ध मध्य करि परिबो शेषरे निशामुक्ति संपर्कित सर्वोत्तम प्रेजेंटेशन आउ एथिपाई आज ये विश्वविद्यालय को चांसेलर कप एवं प्रमाण पत्र जो आज प्रदान करा जायछि कृति विश्वविद्यालय गुड़ी को जो माने एठी आज पुरस्कृत होइकि जाइछन्ते मु समानको शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाउछि आउ यह मध्य केवल केवल खाली कार्यक्रम नुहे बरं आम समाज को एक बड़ विपत्ति रक्षा करबा पई एक दृढ़ शपथ एवं सबुठारु बड़ ये प्रयास मध्य अटे युवपीढ़ी को निशा कलवरु रक्षा करबा ये होछि आमर सबुठारु सर्वप्रथम एवं बड़ कर्तव्य आज आमर शिक्षानुष्ठान गुड़िक 100% निशामुक्त कैंपस सेवा अत्यंत जरूरी अटे समस्त कुलपति मानक मु परामर्श निश्चित भाव में देवी
आपण मानकर ये विश्वविद्यालय नियमित भाव में आपण माने सचेतनता कार्यक्रम अवेयरनेस प्रोग्राम करंतु एवं छात्र छात्री मानक सुमार्ग रे परिचालित करिवा पई आवश्यक जहाँ पड़िबो काउंसिलिंग रो व्यवस्था मध्य करंतु आउ एहा करिवा द्वारा निश्चित भाव में सेमानंकर भाग्य रे परिवर्तन हबो सेमाने संस्कारित हेबे जो माने भी कुपथरे जाउथिबो सेमाने निशा भितरे थिबे ताले निश्चित भाव में निशा मुक्ति पथरे अग्रसर हवा पई रास्ता खोजिबे एवं सेमाने मध्य आगकू बढ़ी पारिबे भविष्यत रे। आज यही अवसर ये कार्यक्रम अवसर में आमको आउ गोटे बड़ सुजोग राज्यपाल महोदय देइछंती। आज माननीय माननीय प्रधानमंत्री प्रेरणादायी मन की बात कार्यक्रम या सीधा प्रसारण कार्यक्रम में भाग नेबा पई गोटे प्रथम थर पई ओडिशा रे एभली एक कार्यक्रम दायित्व नेबा निश्चित भाव में एवं आम समस्त को एकाठी करी मन की बात शुणेबा या निश्चित भाव में गोटे बहुत बड़ आज आम सामने उपस्थापना करिबारे सफल होइछंती। एही कार्यक्रम में देशर विभिन्न प्रांत में घटिथिबा विभिन्न सकारात्मक परिवर्तन साधारण लोकंकर असाधारण प्रयास संपर्क में जानी आम समस्त अत्यंत आज अनुप्राणित मध्य आज आम हो पारिछंती। आज जेभली भाव में आम जे चित्र रे देखिले प्रधानमंत्री मुहरु आम शुणिबार सुजोग पाइले। आज से छत्तीसगढ़ रे जन्म होई पारंती किंतु आम ओडिशा रे आज से ट्रेनिंग नौछंती। अनिमेष कुजूर जो धावक जहां आज आम देखिले 10.15 सेकेंड रे 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता रे जातीय रेकर्ड प्रतिष्ठा करिसंती। तांकु निश्चित भाव में आम अभिनंदन एवं शुभेच्छा प्रदान करिबा। आम एइटी कलिंग स्टाडियम रे प्रैक्टिस करिबा ट्रेनिंग नेबा एवं जातीय स्तर रे रेकर्ड प्रतिष्ठा करिबा। आउ माननीय प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री मनर कथारे तांको किभली भाव में इंटरव्यू नेबा किभली से तांकर उत्तर रखुते कथा आम समस्ते आज देखिक निश्चित भाव में आम आनंद आज अनुभव करिसंती। सेही भली भाव में अनेक चित्र अनेक घटना को एठी आवृत्ति करने स्थिति भितर मध्य कौन सी ना कौन सी मन सबू मन की बात रे ओडिशार कथा केतेबेले ना केतेबेले से तांको सामने आसी जाई थाए। किभली भाव में एबे खरा दिन चली ग्रीष्म प्रभाव अवसर रे जेतेबेले कौ राज्य रे किभली भाव में मृदु पानीय व्यवस्थार करा जाइछि एवं कौटी मृदु पानीय लोक माने व्यवहार करचंती से कथा को आवृत्ति करला परे ओडिशा को से छाड़ी नांती। आम ओडिशा रे चिराचरित प्रथा बेलपणार कथा को से एठी आम सामना रे रखिकरी निश्चित भाव में आम ओडिया अस्मिता को से उज्जीवित करी रखिकी आमको चमत्कृत करी देइछंती आनंद आनी देइछंती। सेथिपाई मध्य आमे आज ये मुहूर्त को भूली परिबा नाही। सेही बड़ी भाव में ये पणा सहित जो आंबर आसर आज सारा भारत वर्ष सहित सारा ओडिशा तो एमिति भी सबुठारु अधिक आंब ये प्रिय राज्य एवं आंब प्रोडक्शन रे मध्य आमे आज अनेक ऐतिहासिक नहीं आम ओडिशार आंब आज सीए केन्दुझर रु मयूरभंज रु आरंभ करी ढेंकानाल अनुगुल रु आपंकर बलांगीर रु आपंकर कलाहांडी पर्यंत कोरापुट पर्यंत जो आंब आज ये कलिकता ठू आरंभ करी सिंगापुर ठू आरंभ करी दुबई आबुधाबी पर्यंत ये आंब जीवा ये निश्चित भाव में एक उच्च क्वालिटीर आंब आज आमे केवल निजे खाऊ ना प्रोडक्ट करी मध्य आज पठेई पारुछंती और ताहा मध्य से आज मन की बात रे रखिछंती एवं आम ओडिशार एक एभली आंब ना से कहिले ताहा मध्य आमे सुवर्ण रेखा आंब ये सुवर्ण रेखा आंब संपर्क से उल्लेख करिथिबारु निश्चित भाव में आमे आज समस्ते गर्वित मध्य होइछंती। एणु मन की बात कार्यक्रम रे ये केवल आमको शुणा नुह ये आमको उत्साहित करने आगामी दिन में प्रेरणा तैयारी करवा एवं से सकारात्मक चिंताधारा को आमे आमर विश्वविद्यालय स्तर में कार्यकारी आमे करवा उचित। आमर ये शिक्षानुष्ठान गुड़िक स्थानीय समुदाय समस्यार समाधान छात्र छात्री मान नियोजित करी सेमानक मध्य देश प्रेम सृष्टि करवा ये अत्यंत आवश्यक। विश्वविद्यालय सम्माननीय कुलपतिगण आपणकर कांधरे ओडिशार लक्ष लक्ष युवपीढ़ी भविष्य गढ़वार ये गुरुदायित्व रही। आपण मानक केवल प्रशासनिक कार्य सीमित न रखी शिक्षार मानदंड रे किभली उन्नति आसीबो अभिवृद्धि घटिबो
ଏବଂ ନୂତନ ଗବେଷଣାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କୁଳପତି ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଶିକ୍ଷାବିତମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ହିସାବରେ ଛିଡ଼ା ହେବ, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ହିସାବରେ ଛିଡ଼ା ହେବ ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ବିକଶିତ ଭାରତ, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ହେଇକରି ଛିଡ଼ା ହେବ। ଏ ପ୍ରକାରର ବହୁତ ବଡ଼ ଆଜି ଦିନର ଆହ୍ୱାନକୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଇଏ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏ ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ଆଶା ଆଜି ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଆଉ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବା। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଶେଷରେ, ଭବିଷ୍ୟତ କାହାରିକୁ ଆପେ ଆପେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତ କାହାରିକୁ ଆପେ ଆପେ ମିଳେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆଜିଠାରୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଇଏ କେନ୍ଦ୍ର ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଡେଣାର ଦେବାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇଏ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର। ଆସନ୍ତୁ ଆମର ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତର ଏହି ମହାନ ଯାତ୍ରାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗରିମାକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ, ଅପାର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଏକ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧରେ, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ରୂପରେ ଆମେ ସେ ସ୍ତରକୁ ନେଇକରି ପହଞ୍ଚାଇବା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁଇଦିନିଆ ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ, ଏ ଯେଉଁ କର୍ମଶାଳା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେଉ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। Thank you, sir, for that insightful address. Moving ahead, I now have the privilege to invite His Excellency, Honorable Governor of Odisha, Dr. Haribabu Kambhampati, to deliver his address. So please. Honorable Chief Minister, Shri Mohan Charan Majhi ji, Honorable Deputy Chief Minister, Shri Kanakavardhan Singh Dev ji, Honorable Ministers, Dr. Mukesh Mahaling ji, Shri Nityananda Gond ji, Sampad Chandra Swain ji, Shri Suryavamsha Soras ji, Senior Officers of Government of Odisha, esteemed Vice-Chancellors, distinguished guests, ladies and gentlemen, I extend a very warm welcome to all of you to this conference of Vice-Chancellors of state public universities and private universities of Odisha. As Chancellor of the state public universities, I regard this gathering not merely as an administrative exercise, but as a collective endeavor to shape the future of higher education in our state. Universities are centers of knowledge, innovation, and leadership. It is heartening to see all stakeholders assembled here with a shared commitment to academic excellence and nation building. While this conference may appear to be a routine engagement, it assumes greater significance
in the present global context. The world is changing at an unprecedented pace. New disciplines are emerging, technologies are transforming societies, and fresh challenges confront nations every day. Recent geopolitical developments across the world remind us that not only nations with strong intellectual, technological, economic, and human resource capacities can confidently navigate such uncertainties. India today is advancing steadily towards the vision of Atmanirbhar Bharat. This is not merely an economic aspiration, but a national mission to build self-reliance in knowledge, innovation, technology, manufacturing, healthcare, energy, and education. Our universities must become active partners in this transformative journey by preparing young minds not only to seek opportunities but also to create them. Universities occupy a unique place in the lives of students. They are the final stage of formal learning before young people enter society as professionals, innovators, entrepreneurs, and responsible citizens. Therefore, our universities must remain responsive to changing times and emerge as institutions that nurture skilled, ethical, enlightened, and socially conscious individuals. The quality of human capital they produce will shape the future of Odisha and India. In this regard, I commend the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. His call for Atmanirbhar Bharat has inspired the nation to pursue innovation, entrepreneurship, and self-confidence. Initiatives such as Startup India, Digital India, Skill India, Make in India, PM Gati Shakti, the National Green Hydrogen Mission, and renewable energy programs are strengthening the foundations of India's future growth. The National Education Policy 2020 marks a landmark reform in Indian education. I place on record my appreciation for Honorable Union Education Minister Shri Dharmendra Pradhan ji for his significant contribution towards translating this vision into action. I congratulate Honorable Chief Minister Shri Mohan Charan Maji ji and the Government of Odisha for their commitment to its effective implementation. NEP 2020 emphasizes multidisciplinary learning, academic flexibility, skill integration, digital education, research, innovation, and stronger university-industry collaboration. It seeks to prepare students with critical thinking, creativity, problem-solving abilities, and employable skills. These reforms are particularly relevant in an era shaped by artificial intelligence, quantum technologies, renewable energy, and rapidly evolving labor markets. Our universities must become vibrant laboratories of these transformative ideas. Odisha is home to 64 scheduled tribe communities, including
13 particularly vulnerable tribal groups. The tribal cell of Lok Bhavan has undertaken an important initiative of documenting PVTGs through photo essay publications using visual anthropology tools and methods. These documents will be made available to universities for scholarly engagement and research on tribal governance. I urge all Vice-Chancellors to ensure that these publications reach students and researchers in disciplines such as anthropology, sociology, history, tribal studies, and the humanities. Our campuses should become centers of meaningful research on indigenous knowledge systems, cultural preservation, and sustainable development. Our tribal heritage is not merely a subject of study, it is a source of wisdom, identity, and pride. The agenda of this conference is comprehensive and forward-looking. Over the next 2 days, you will deliberate on NEP 2020 implementation, multidisciplinary education, employability, digital transformation, university-industry partnerships, innovation ecosystems, artificial intelligence, quantum technologies, green energy, sustainability, governance reforms, youth leadership, and nation building. Together, these themes define the future of higher education and the future of India. I am confident that your deliberations will generate practical recommendations, innovative ideas, and a shared roadmap for strengthening higher education in Odisha. Let us work together to build universities that are globally competitive, socially responsible, technologically advanced, and deeply rooted in Indian values. With these words, I once again welcome all distinguished participants and wish the conference great success. Thank you all. Vande Utkala Janani. Jai Hind. Thank you, sir, for a kind address. As we draw conclusion to the first session, may I kindly request His Excellency, Honorable Governor Dr. Hari Babu Kamampati, to felicitate the honorable dignitaries on the dais. Starting with Sri Suravanshi Suraj, Honorable Minister, Higher Education, Sports and Youth Services, and Odia Language, Literature and Culture Department, Government of Odisha. Next, may I kindly request Honorable Governor to felicitate Sri Sampath Chandra Swai, Honorable Minister, Industries, Skill Development and Technical Education Department, Government of Odisha. May I now request Honorable Governor to felicitate Sri Nityananda Gonda, Honorable Minister, School and Mass Education, ST and SC Development, Minorities and Backward Classes Welfare, and Social Security and Empowerment of Persons with Disabilities Department, Government of Odisha. Moving ahead, I request Honorable Governor, sir, to kindly felicitate Dr. Mukesh Mahaling, Honorable Minister, Health and Family Welfare, Electronics and IT, and Parliamentary Affairs Department, Government of Odisha.
I now request Honorable Governor Sir to felicitate Shri Lok Bhavan Singhdeo, Honorable Deputy Chief Minister and Honorable Minister, Agriculture and Farmers Empowerment and Energy Department, Government of Odisha. Now, I may request Honorable Governor Sir to kindly felicitate Shri Mohan Charan Majhi, Honorable Chief Minister of Odisha. Thank you, sir. May I kindly request everyone to kindly rise for the national song followed by the national anthem.
How time turns, Rajdeep. Usually, and several of our viewers would recall this, in the morning there'd be a lot of activity at the BJP headquarters, and the only image we'd catch at the Congress headquarters is ironically a dog on the lawns, right? I mean, that's all that you'd say on the Congress headquarters. Now, completely different. Rahul Gautam, we've got all these guys playing drums, and Piyush Mishra reporting that there's nothing happening at the BJP headquarters. I mean, this is a very different election. Clearly, the exit polls have suggested that the Congress is on the upswing. But before we go to Rahul Gautam, let me just go across the table to ask very quickly, 30 seconds each, what all our panelists are looking forward to most today. Preeti, why don't you kick it off? What are you looking forward to most today? Taking off from what also Rahul stated, what's also different this time, where the Congress is concerned, Rajdeep, is usually where they think that they're winning in Haryana, because clearly they think they're winning, that's why they got the doles out. They have already started speaking with certain independents. I've just got a message from an independent who's poised to win, in Ambala, or looking that she might win. And they're already in touch with these independents, saying, just in case we need you, you need to be with us. I would be they're very comfortably Okay. What are you looking forward to most, Rahul Verma? I think, for me, 2024 pointed out that there is bipolarity developing in state party systems, whether this will continue or not. And the reason is BJP can only come to power if the verdict is fragmented in both states. Okay. Amitabh. See, I think if you see in Haryana, the performance of JJP is key. What is the extent of the level of decimation of the JJP will decide whether Congress wins a simple majority or a significant majority. Okay, so they won 10 seats last time. You're going to look forward to seeing whether they completely get decimated and whether there is bipolarity as a result. And in J&K, we have to see what happens in the Muslim majority Jammu region, which has 16 seats. 6 seats are reserved for STs. So this social engineering which BJP is trying to do, will it be able to gain in the Muslim majority Jammu is what we'll have to see. Rajat. 2 cases, Haryana and Jammu and Kashmir, very different approaches of the BJP in both the states. They were pushed against the wall in both these states. They did